टेस्ट 8 और 9 रो डिस्कशन ठीक अछि जदि हबो टाइम जदि बहुत लंबा चलला देन काली या तो परदिन आ गोटे सेशन रखिबा कंप्लीटली केवल स्ट्रेटजी पे ठीक अछि जदि टाइम परमिट हैला देन मु आज तुमको स्ट्रेटजी कहबी नेक्स्ट गोटे मासर ठीक अछि आमे माने कोन एकदम किछि आंसर बसिक पढ़िबानी ओके दिस इज ऑफ नो यूज तुमको आंसर दिया हिची जस्ट वी विल सी दो जो क्वेश्चन वाला सब इजी अच्छी माने डायरेक्ट अच्छी प्रॉपर तुमको डायमेंशन जना पड़ुची कोन लिखियार अच्छी इथरे ओके सेउडा आमे डिस्कस करियानी बेसी टाइम नबानी जो थिरे तुमको जना पड़नी हाउ टू स्टार्ट और कोन डायमेंशन आमे इथे लिखि थांतु पर्टिकुलरली एथिक्स पेपर हैला सेउडा को आमे प्रॉपर्ली डिस्कस करिया ओपन एंडेड माने फ्रॉम बोथ साइड यू विल टेल कि हाउ टू स्टार्ट व्हिच डायमेंशन यू कैन राइट okay so welcome you all to this discussion mostly this is the last discussion of your sectional test ठीक अछि then full length test of the discussion हबो इथिरे गोटे पेपर होछि तमरा पेपर 3 आउट होछि पेपर 4 ओके अधा अछि फर्स्ट ऑफ ऑल मु समस्त गुड इवनिंग there are so many students who are writing very excellent answers okay तम भितर की अच्छो टेस्ट 8 9 राउ माने इवैल्यूएटेड कॉपी पाइनो या तो बैच 2 रो एडा होची टेस्ट 2 और 4 मो पाखरे जति के आंसर थिला मु दे दीची बाकी की अच्छो जागु मिलिनी इवैल्यूएटेड कॉपी की पाइनो हाथ उठेलो पुनी अच्छा शुभ स्मिता पाइनो नहीं हाँ कौन कहूचो कि तमे टेस्ट कॉपी पाइनो आंसर कॉपी सर नमस्कार सर ना आंसर कॉपी पाइनी सर और एसे पेपर टा भी पाइनी सर ऐसे तो ऐसे मु भी देखिनी लिपुन भी पाइनो टेस्ट 9 रो पाइनो ना कोथरो पाइनो 8 रो भी आसीनी सर अच्छा अच्छा ए ताले एटा तो हम शुभम सारम पाखरे अछि हला से दे देबे गोटे दि दिन दे देबे तमे भी शुभ श्वेता तमे टेस्ट 8 रो पाइनो ना सर मो पाखरे जहा कॉपी थिला मु सब चेक करिकी दे देची मु 8 रो पाइची सर सॉरी मु पाइची 8 रो एसेडा पाइनी सर ऐसे ऐसे तो मु भी देखिनी टेस्ट 8 रो एती खाता मो भर अछि 8 9 रो मो पाखरे जहा थिला मु दे देची ओके एनीवे जी पाइनो गोटे दि दिन रे पाइ जबो ठीक अछि मो पाखरे जहा थिला मु आज भी देखि दे देली केवल एसे अछि एसेडा तुमको गोटे दि दिन रे दे देबी जहा जहा कॉपी अछि बाकी शुभम सर भी देखि दे देबे हला मु कथा होतली सारा सहित एक्चुअली हेक्टिक शेड्यूल टिके चलछि तो पाइ जबो डोंट वरी बट बहुत पिला एक्चुअली बहुत भलो आंसर लिखुचो हला मु सना नाम भी लिखि रखी छी देवस्मिता अच्छो ग्रुप रे माने डिस्कशन रे अच्छो अच्छा लिप्सा देन हमरो अर्चना ओके देन देवाशीष पंडा सुशांत रंजिता पाणिग्राही जन से भी बहुत भलो लिखुचंदी ओके सो यू गाइस आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स आउरी बहुत पिला भी लिखुचंदी मोर एतकी नाम मन पडुची एबे मो पाखर जति कॉपी अछि बाकी सारम पाखर अछि जो माने भी टॉप रे भलो स्कोर माने एटलीस्ट जो माने भी आउट ऑफ 150 मोर देन 60 जो माने स्कोर करूचो यू आर ऑल इन गुड स्पेस ओके केवल तुमको खाली एंश्योर करियार अछि जे याकू जंती तमे रेप्लिकेट करि परिबो एग्जाम रे आ जो जिंसो हमें तुमको कहूचू फीडबैक रे दोचू ओके ताकू तमे खाली इंप्लीमेंट करो आउ कंटेंट बाय एंड लार्ज जो माने भी भलो लिखुचो समस्त कंटेंट रे किछि प्रॉब्लम नै ओके ओनली थिंग इज की अच्छो जो माने की एग्जांपल लिखुना बेसी आज जनकर खाता कार देखुथली वेरी गुड कंटेंट बट नॉट इवन ए सिंगल एग्जांपल okay and particularly in ethics paper not ethics paper generally in all gs paper and more in ethics paper without example you will not score good marks okay तो तुमको भलो एग्जांपल माने एग्जांपल लिखियार अछि इन ईच एंड एवरी पॉइंट टू जस्टिफाई योर पॉइंट यू जस्ट राइट एग्जांपल स्मॉल गोटे लाइन रो गोटे वर्ड दि तीनटा वर्ड रो गोटे स्कीम रो ना लिखि देलो गोटे पुलिस रो ना लिखि देलो ओके गुड गुड एडमिनिस्ट्रेटर रो ना लिखि देलो
गोटे गुड बिजनेसमैन ना लिखिदेल कि वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ी दी तीन वर्ड एक्सीलेंट या पार एक्सीलेंस वुमेन ना लिखिदेल ओके जो मैंने किसी अचीव कर सक्सेसफुल होती तो एमतीया किसी हेल्थ ऊपर लिखुच गोटे स्कीम ना लिखिदेल विदाउट राइटिंग एग्जांपल it's your understanding is limited. Okay, to the examiner it seems like your understanding is limited, you don't know how to implement. Okay, तो ट्राई करिवो कि एग्जांपल लिखिया पई जनरल किछिरा मिस्टेक जो माने पिलांगर मु कहूची एडे मु लिखि देबी. ओके, एडा होची हमर देन विल स्टार्ट. ठीक अछि, एडा होची हमर टेस्ट 8 and 9 बैच 2 रो होची टेस्ट 2 and 4 हला. मेन हला इन कंटेंट examples are must. ओके, जोटा कि बहुत पिलांगर देखी बाय एंड लार्ज कंटेंट रे ठीक अच्छी गुड़ाए पिला कौन कर एग्जांपल्स लिखुन. ओके, या तो लिखिले गोटे दिटा पॉइंट लिखुच बाकी पॉइंट लिखुन. देख चारिटा पॉइंट लिख बट चारिटा पॉइंट को जस्टिफाई कर. ओके, आउ गोटे जिनस कौन कि जिते पारुच इंस्टेड ऑफ जनरल टर्म्स ट्राई टू राइट कीवर्ड्स मोर. सबू टॉपिक रो कीवर्ड्स तुम एबे सुधा ऑलरेडी जानि सारथिबनी पढ़ी की नोट बनै की. ओके, तो कीवर्ड्स गुड़ा जिते पारुच लिख गोटे एटलीस्ट सब पॉइंट रे गोटे गोटे कीवर्ड लिख. एनवायरनमेंट ऊपर पढुची देयर आर सो मेनी कीवर्ड्स. ओके, गवर्नेंस रे अछि, साइंस एंड टेक सबुतिर अछि. ओके, एंड पर्टिकुलरली इन एथिक्स पेपर रे सिलेबस रे जति की कीवर्ड अछि ओके ताकू पूरा बाय हार्ट कर दवार अछि. जहाँ सिलेबस रे लिखा है ओके जिते वर्ड सिलेबस रे लिखा है ओनली इफ यू रिमेंबर दोज वर्ड्स यू विल राइट वेरी गुड आंसर. ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग जनरल थिंग्स यू राइट ऑल द कीवर्ड्स इन द सिलेबस ताकू पूरा घोषी की मन रखि दियो. यू शुड राइट एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम इन ईच एंड एवरी आंसर. ओके, जेति की पारिबो ताकू तमे इवन सी डोंट रेस्ट्रिक्ट कि मु एथिक्स रो ए जिंसटा केवल एथिक्स रे लिखिबि. नो, you write those things in other paper also. Out jinsa content re kona try to give a ethical solution to each problem. Okay, बहुत पिलांगर मु देखु जेतलो वे फॉरवर्ड लिखुच इवन इन पेपर 2 हला 1 हला 3 हला तमे कोन करूछ जोटा माने पढी थाउछ सेही माने टेक्निकली धर हेल्थ ऊपर पढिछि. ओके, only infrastructure ये से एतकिरे रहि जाउछ solution. You give an ethical solution also. Okay, there also morality, ethics, okay, conscience and other things are applicable. To improve anything you need to create a better mindset. Okay, जेमती हमरो बे क्वेश्चन पड़थिला कि moral apathy ऊपर क्वेश्चन पड़थिला. Okay, so those are the problems in each and every sector. Okay, not it is not a problem only to governance, it is a problem in science and tech, it is a problem in environment. Okay, so try to give an ethical solution. मन रखुच जो माने देखुच आई विल रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स. देखो बेले बेले कोन होय कि ए छोट छोट जिंस ही तुमको मार्क इंप्रूव करेबो. यू नीड दैट एक्स्ट्रा 10 मार्क्स इन योर पेपर. ईच पेपर तुमको से 5-10 मार्क एक्स्ट्रा दरकार जो थी कि तुम रैंक आसीबो. या तो जो माने ऑलरेडी रैंक आसिया स्टैंडर्ड आंसर लिखुछ यू विल गेट अ बेटर रैंक. ओके, अदरवाइज किछि रॉकेट साइंस एथिरे नाही. एवरीवन इज राइटिंग द सेम काइंड ऑफ आंसर. ओके, आई हैव सीन सो मेनी पीपल माने मोर सांग अछन जो माने कि दोज आर इन सिंगल डिजिट रैंक. ओके, दे आल्सो राइट आंसर्स लाइक मी. 19-20 रो फरक. ओनली थिंग इज किछिटा स्मॉल स्मॉल जिंस से माने करूछन जोडा कि बाकी पिलांगु तो तांगा आंसर को टिके बेटर करे दोछ. एक्स्ट्रा 1 मार्क पाई होछन, एक्स्ट्रा 2 मार्क पाई होछन. ओके, ट्राई टू ऑलवेज राइट इन सॉल्यूशन कंटेंट विषय हम कहूची. ओके, जतेले भी तमे वे फॉरवर्ड दोछ ट्राई टू राइट सेकंड ARC. ओके, various committees ର recommendations. देखो
nobody remembers the all the this is the intelligence presence of mind जो कहती तमे केवल मन रख गोटे कमिटीर ना नो नीड टू रिमेम्बर व्हाट ही रेकमेंडेड किसी दरकार नहीं मन रखिए से कौन रेकमेंड करिसेंती ओके ओनली थिंग यू राइट हिज नेम एंड राइट योर ओन रेकमेंडेशन जेतल वे फॉरवर्ड लिखुच तमे भाबुच कि एग्जामिनर मन रखिथिबो जे एई कमिटी एग्जैक्टली रेकमेंडेशन देथिला बोली नो एंड व्हाट एवर यू विल गिव रेकमेंडेशंस डोंट थिंक कि से कमिटी दे नथिबो जदि तुमको गोटे जिंसर प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन एटा देखा जाउची से कमिटी रे जे बस्थिबो ताको देखा जाय नथिबो obviously लिखा जीवो सेमानंगु आमटू 10-20 टाइम्स मोर सॉल्यूशन देखा जीवो राइट तो ऑलवेज ट्राई टू राइट ए कमिटी नेम माने ऑलवेज इन द सेंस ट्राई टू राइट एज मच एज पॉसिबल तो सबु माने कोन जो हमर अछि सेक्टर ट्राई टू रिमेंबर वन कमिटी नेम फॉर ईच सेक्टर ओके फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट हला एनवायरनमेंट रो गोटे कमिटी रो नाम को गडगिल कमिटी गडगिल कमिटी जे कि वेस्टर्न घाट ऊपर देइथिले ओके कस्तूरी रंजन कमिटी ओके इंस्टेंटली तुमको मन पड़ियार अछि सो दैट व्हेन यू राइट ए सॉल्यूशन राइट हिज नेम एंड राइट योर ओन सॉल्यूशन ओके इट गिव्स एन इंप्रेशन आउ सबु बेले एई वर्ड गुडा को ना आइदर कैपिटल लेटर रख नहले प्रॉपर्ली ताको बॉक्स करो या तो प्रॉपर्ली अंडरलाइन करो एंड आउट जिनस प्रेजेंटेशन में कहबी नाउ इट इज ए कंटेंट पार्ट ओके ऑलवेज ट्राई टू डू दैट सेकंड एआरसी को भूलियोनी सेकंड एआरसी इज सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इरेस्पेक्टिव ऑफ योर पेपर पेपर 1 2 3 4 जेते जहा प्रॉब्लम अछि सबरो सॉल्यूशन सेकंड एआरसी रे अछि ओके तो ट्राई टू राइट सेकंड एआरसी इन मोस्ट ऑफ द जेतले लिखुचो वे फॉरवर्ड वगैरह सेकंड एआरसी को लिखो कोड करो ठीक अछि कमिटर ना लिखियो मोर जहा जहा माने मने पडुची लाक्यूने तमे जहा जो जहा सब करूचो से बेसिस रे हम कहूची नेक्स्ट हला whether they are asking you any solution or not always try to give some solution okay always try to write either way forward or solution को भी सोशल इश्यू जदि क्वेश्चन पड़ी पेपर 2 हला 3 हला 4 रे भी हला 1 रे भी जो सोसाइटी पार्ट अछि whether they are asking you or not right way forward बहुत पिला कौन करूछ जदि क्वेश्चन ने पचारुनी तमे लिखु न लेख जदि पचारि छी 5टा पॉइंट लिखिबो जदि न पचारि छी 3टा पॉइंट लिख बट लिख see when you explain a problem the problem doesn't end there okay as an administrator they are expecting you ki you give some solution whether they are asking or not see OPSC or UPSC ro correction strategy is very different okay UPSC रे बहुत जिंस बेले बेले एप्रिशिएट करंतिनी बट व्हेन जदि तमे भाबो गोटे भलो एग्जामिनर पाखरे तमे खाता पढिछ और तमे लिखिछ देन यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क ओके एंड आमे तो या एक्सपेक्ट करके चलिया ना कि भलो माने टीचर खाता देखुचंदी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि खाता भलो देखा होनी एंड ऑल आमे जानिछु बेले बेले हुए बट वी ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक हमको ऑप्टिमिस्टिक होबार अछि एंड जोटा एक्चुअली बेटर जोटा बेस्ट जोटा पिला माने करूचंदी टॉपर्स माने जोटा करूचंदी यू डू दैट okay whether they are asking you or not you always write some solution बुझ परला सॉल्यूशन केबे छाडी होनी प्रॉब्लम लिखि दे कि केबे छाडी होनी जहा तमे प्रॉब्लम लिखिलो जदी पडिछि कि कोन करियार अछि एथिरे ए अछि जस्ट डिस्कस करो इन डिस्कशन यू राइट वे फॉरवर्ड आल्सो ओके जदी गोटे जिंस ऊपर डिस्कशन करियो होछि डोंट जस्ट लीव विथ डिस्कशन लीव एट द एंड ट्राई टू गिव सम सॉल्यूशन और ट्राई टू गिव सम वे फॉरवर्ड ठीक अछि नेक्स्ट हला दी तीन जन को छाड़ले आउ कोन कंटेंट अछि एंड हां गोटे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डिवाइड करिवो केतेटा डायमेंशन रे से पचारुचे आंसर ओके डिवाइड द क्वेश्चन इनटू required dimensions okay जेतेटा डायमेंशन रे अछि सेतिटा लिखिवो एंड गिव इक्वल वेटेज ओके टू ईच सेक्शन कोन गोटोडे पिलांगर कोन हेछि एथि पेपर हम देखुतली जहा क्वेश्चन पचारिछि
ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଡିଂ ଦେଇକି ତମେ ଲେଖୁଛ ସେଇଠି 3ଟା ପଏଣ୍ଟ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ଯୋଉଟା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତମେ ଲେଖୁଛ ସେଇଥିରେ 5-6ଟା ଲେଖେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛ। ଓକେ, ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଯଦି 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଉ 2ଟା ଡାଇମେନସନର ଧର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା, 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 2ଟା ଜିନିଷ ସିଏ ପଚାରୁଛି, ତମେ କ'ଣ କର ଏଇଠି 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ଏଇଠି 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏଇଠି 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛ ଆଉ ଏଇଠି 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛ। ଓକେ, ସେମିତି କରିବନି, ଇକ୍ୱାଲି ପାର୍ଟ ଦବ। ଯଦି ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ 5 ମାର୍କର ଅଛି, ଗୋଟେ 10 ମାର୍କର ଅଛି, ଓକେ, ତ 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏଠି 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ଏଠି 10 ମାର୍କ ପାଇଁ 6-7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ରାଇଟ୍? ଏମିତି ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ एंड कंक्लूजन, ऑलवेज ट्राई टू राइट शॉर्ट इंट्रो एंड कंक्लूजन है। जो माने भी बहुत लंबा लंबा लिखुच, यू वोंट गेट टाइम टू राइट दिस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन इन एग्जाम। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू राइट शॉर्ट इंट्रो एंड शॉर्ट कंक्लूजन। यू गिव योर टाइम इन बॉडी पार्ट। ओके, बॉडी पार्ट रे जिते टाइम दरकार सेते दियो, बिकॉज यू गेट मोर मार्क फ्रॉम बॉडी। इंट्रोडक्शन शुड बी माने कौन अट्रैक्टिव, बट बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दियोनी। इट शुड बी लाइक इंट्रोडक्शन कौन हो पारे, शुड बी लाइक ए डेफिनेशन, ओके, किछ गोटे फैक्ट, ओके, किछ गोटे स्टार्ट विथ ए व्हाट स्मॉल काइंड ऑफ एग्जांपल स्कीम, ओके, ए वाला स्टार्ट करो एंड किछ गोटे रिकमेंडेशन एंड शॉर्ट। इंट्रोडक्शन को शॉर्ट रखिवो, कंक्लूजन को भी शॉर्ट रखिवो हैला। बहुत पिला बहुत लंबा लंबा रखुछ, सेटा कि पढिबेनी, तुम लंबा लिखले पढिबेनी कि, राइट? इट शुड बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, बुझ पालो? नेक्स्ट आउ कोन रहिला, आ जदि कार किछि अछि डाउट पचारिबो। ओके, नेक्स्ट हम जिवा प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन रे फर्स्ट जिंस होची, एबे भी मु लिखुची, माने इवन आफ्टर 10 टेस्ट हला परे भी किछि पिलांग मु खाता रे एबे भी लिखुची कि काइंडली अंडरलाइन। दिस शुड नॉट हैपन। तमे जेते भलो जिंस लिखि के आस, नोबडी इज गोइंग टू रीड एंटायर पेपर। केही तमर एंटायर पेपर पढिबेनी, तुमको भी जदि मु गोटे लिखि देबी ना, तमे भी पढिबोनी। ओके, तो तुम जानिया दरकार जे जदि मु 30 गोटे 60 पेज र आंसर तुम लिखि आसीबो एग्जाम रे, 30 पेज लिखुछ, 60 पेज लिखि आसीबो, को भी माने गोटे लोक जे खाता देखुची, जे कि 10-15टा खाता गोटे दिन रे देखिवो, से केबे भी एंटायर तुम आंसर पढिबो कि पढिबोनी। सो ट्राई टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड ऑल इंपोर्टेंट वर्ड्स। तुम देखो जिते टॉपर मानकर खाता देखो, if you underline, that becomes a कौन important thing for the examiner also। सी केवल सेटा को चेक करियो। एग्जामिनर मेनली कौन देखन जानिचो, मेन हला तमर हेडिंग, सब हेडिंग, ओके, आ जहा तुम अंडरलाइन करछो, केवल एति ही देखंती एग्जामिनर। ओके, तुम कहबो हम बहुत भल लिखि आस्थिली बट मार्क पाइलिनी। ओके, तुम जानि भी पारिबोनी मार्क कोन में मिललानी। सो डू दिस थिंग्स। हेडिंग सब बेले बॉक्स रे लिख, जी भी अंडरलाइन करके लिखुच भल अच्छी, बट स्टिल बॉक्स रे लिख। मु कहूँ हेडिंग सब बेले बॉक्स रे लिखिवो। सब हेडिंग आल्सो ट्राई टू राइट इन बॉक्स, और अंडरलाइन करले भी चलिवो, बाकी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिवो, राइट? नेक्स्ट होची प्रेजेंटेशन रे मु तुमको करके देखुची, धर एटा गोटे हेडिंग लिखिलो हला, एठू लिखिया स्टार्ट करनी। किछि पिला एबे भी लिखुछ, एठू लिखि दोछ, एठू लिखिया स्टार्ट करनी। ओके, यू विल गेट एनफ स्पेस, स्टार्ट फ्रॉम हियर। एठू लिखिया स्टार्ट करो, आइदर गोटे लाइन तळे लिख या तो गोटे लाइन छाडी कि ता तळे लिख। एठू लिखिले कोन हबो, यू जस्ट सी द डिफरेंस। एठू तळे तुम लिखिया स्टार्ट करलो, तमर हेडिंग ता प्रॉपर्ली विजिबल हैला, तुम एठू कोन लिखिछो। एठू जदि तुम लिखिया स्टार्ट करिवो, ता तळे लिखिवो, एठू लिखिवो, देन इट विल नॉट बी विजिबल प्रॉपर्ली। एकदम पूरा ताकू छाड़ो, जिंदी सेटा एकदम क्लियरली देखा जीवो, ता साइड रो लिखा दरकार नहीं, एठू भी स्टार्ट करिया दरकार नहीं। स्टार्ट फ्रॉम हियर, गोटे लाइन छाडी के स्टार्ट करो। ओके, ताकि तुमरो हेडिंग दा प्रॉपर्ली देखा जीवो। सेम गोस विथ सब हेडिंग आल्सो हला। सब हेडिंग भी जतळ दोउछ, स्टार्ट फ्रॉम हियर, या तळु भी केबे लिखिवोनी कि एठू भी केबे लिखिवोनी।
ओके ए दी जगह केबे लिखिबोनी तळटा भी छाड़िबो ए साइडटा भी छाड़िबो सो दैट एटा प्रॉपर्ली देखा जिवो तुम कोन भी लिखिछो ठीक अछि जोठे भी तमे किछि गोटे लोकर ना लिखुछ किछि गोटे स्कीम रो ना लिखुछ ट्राई टू राइट इन कैपिटल लेटर हैला जदि कि स्कीम लिखुछ या तो किछि गोटे नेम लिखुछ इंपोर्टेंट हैला जदि नाही ताको प्रॉपर्ली अंडरलाइन करो ठीक अछि नेक्स्ट होची प्रेजेंटेशन रे मैप ओके मु गोटे ट्रिक अप्लाई करूथली लास्ट 2 टाइम्स हेलानी जो मानकर मैप करियार हैबिट नाही जो माने मैप करूछ वेल एंड गुड जो मानकर मैप करियार हैबिट नाही व्हाट यू डू इज जेतेले तुमको क्वेश्चन पेपर मिलिवो ओके फास्ट रे गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर फास्ट रे एग्जाम रे मन पकेबो कि को क्वेश्चन रे मैप हेई परिबो धर क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड दिस तो क्वेश्चन पेपर मिलू मिलू देखिला क्वेश्चन नंबर 1 रे मैप हेई परिबो टिक मारो लिखि दियो एटा मैप धर क्वेश्चन नंबर 4 रे मैप हेई परिबो लिखि दियो एटा मैप सो दैट तुम जितल अटेम्प्ट करियो क्वेश्चन ना एटा स्किप होबनी बेले बेले कोन हो कि फ्लो रे भूली जानते हमें ओके तो एटा स्किप होबनी मोर भी मैप करियार हैबिट नथिला बट आई डेवलप दिस टेक्निक कि जितल क्वेश्चन पेपर मिलुची फास्ट आई विल राइट कि कोडे कोडे मैप हेई परिबो मिनिमम तुम देखिबो प्रति पेपर रे एथिक्स पेपर रे हेई न पारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हेई परिबो पेपर 2 रे 3 रे 1 रो भी किछि पार्ट रे 1 रो किछि पार्ट कोन ज्योग्राफी रे ओके बहुत जगह मैप हेई परिबो सो जेतल क्वेश्चन मिलुची फास्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1 रे टिक करो मैप लिखि दियो सेतल जेतल भी तुम आंसर करूछो ना सब बेले क्वेश्चन पेपर टाको देखुथुबो तमरे भी तो एमती हलानी कि आंसर शीट रे ही क्वेश्चन लिखाई थाए क्वेश्चन लिखाई थिबो 1 और 2 पेज छडाई थिबो पुनी क्वेश्चन लिखाई थिबो ठीक अछि बट स्टिल जेतल भी क्वेश्चन पेपर टा देखिबो ए जे क्वेश्चन अटेंड करूछो क्वेश्चन पेपर टा भी देखिबो सो दैट तमर मन पडिबो जे ए क्वेश्चन ने मैप मु लिखिथिली तो मैप करियार अछि बुझि परछो तो मैप इज माने मैंडेटरी इन सर्टेन प्लेसेस फॉर एग्जांपल जियोग्राफी क्वेश्चन हला क्वेश्चंस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी रो किछि क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नक्सल वगैरह हला पड़ला हला बाकी एनवायरनमेंट रो किछि क्वेश्चन हला देन सोशल इश्यू रे भी करि परिबो इंडिया मैप ओडिसा मैप हला इंडिया एंड ओडिसा ए दिटा मैप टिके प्रैक्टिस करो माने ब्लैंक मैप थरे प्रैक्टिस करो टिके भलो भी मैप देखा जियो दरकार ओके आ पूरा मैप करिया दरकार नहीं ओके धर तमे हिमालयन इकोसिस्टम लिखुछ हिमालयन इकोसिस्टम ऊपर क्वेश्चन पड़छि नो नीड टू ड्रॉ दिस कंप्लीट इंडिया मैप हला इन करिके पूराटा देखिया दरकार नहीं केवल एतिकी पार्ट भी तुम जो देखै देला इट्स स्टिल गुड ओके कारण हिमालयन केवल ए पार्ट अछि बुझि परला गोदावरी रिवर सिस्टम ऊपर पड़छि या तो वेस्टर्न घाट ऊपर क्वेश्चन पड़छि जस्ट ड्रॉ दिस मच एतिकी सफिशिएंट हला पूरा देखिया दरकार नहीं ए पार्ट उडा सब करिया दरकार नहीं राइट तो ये भलिया मैप को केतिकी करिवो को जगह रे करिवो दैट इज इंपोर्टेंट आ गोटे जिंस आंसर रो केबे भी एमती साइड रे एटा धर आंसर शीट टोटल टा हला ए साइड रे गुंजी के मैप करे दरकार नहीं मैप पूरा मझिरे करो हला हमको एते स्पेस मिलिवो एग्जाम रे पेपर रे कि तम पाहरे बेले बेले माने कंटेंट हम पाहरे सफिशिएंट न थाए सो दिस इज ए बेस्ट वे टू कवर द एंटायर पेपर माने पूरा पेपर टा कवर करि हबो भल से मैप करिवो एठी मैप तळे सब बेले लिखिवो ताकू कन्वर्ट करिवो कोन मैप करूछ ओके फिगर करके एमती करके लिखिवो कोन तमे एटा मैप करूछ आ ट्राई करिवो मैप टाकू सब बेले बॉक्स रे रखिया में हला मैप टाकू बॉक्स रे रखो फिगर करके तळे लिखो कोन तमे को ऊपर मैप करिछ राइट ए सब जिंसोडा इंपोर्टेंट नोट डाउन करके रखो नेक्स्ट होची हमर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कोड कोड फ्लो चार्ट यूज करो जो दरकार एकदम मोनोटोनस वे रे कॉपी लिखनी ओके फ्लो चार्ट यूज करो कोड टेबुलर फॉर्मेट रे लिखो जदि किछि गोटे कंपैरिजन पडिछि ओके कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइप रो क्वेश्चन देन ताकू फ्लो चार्ट रे आंसर ताकू टेबुलर फॉर्म रे लिखो किछि किछि जिंस फ्लो चार्ट रे लिखो हला देन किछि जिंस हम सर्कल बने के एमडी करके लिखो धर तुम बारे टाइम नहीं लास्ट आडू गोटे दिटा क्वेश्चन लिखुछ
तार चैलेंजेस यही फॉर्मेट रे लिखि दियो हैला नले एमदी करके चैलेंजेस करके लिखि दियो या तो वे फॉरवर्ड लिखि दियो ठीक अछि सब जगह रे करिवनी बट किछि किछि जगह रे करि परिबो हैला एमदी नै जे गोटे किए जण लिखुतले गोटे कॉपी सरफराज बोधे कि कोन थर देखितली एंटायर 10 टा क्वेश्चन रो सब क्वेश्चन रो फॉर्मेट ए टाइप रो डोंट डू दैट ओके ऑलवेज ट्राई टू राइट इन पॉइंट आउट जिंसो पॉइंट रे लिखो एबे भी किछि पिला एमदी तीर मारि के लिखुछो हैला कि एमदी केमदी करि लिखुछो डोंट डू दैट ऑलवेज ट्राई टू राइट इन 1 2 एवला पॉइंट रे लिखो एबीसीडी दियो हैला या तो 1 2 3 दियो जत्ते पारुछो एमदी लिखिले भलो कोठी कोठी ठीक अछि गोड दिरा पॉइंट एमदी कर देला बट मोस्टली ट्राई टू राइट इन दिस फॉर्मेट एथिरे कोन कि जणा भी पडिबो ना तुम केतरा पॉइंट लिखिछो तुम धर एमदी तीर तीर मारि 7टा पॉइंट लिखि देलो बट एबीसीडी कडी जण जदी जाईची ईएफजीएच पॉइंट मु कोन भाबी ये बहुत पॉइंट लिखिछि या तो 1 2 3 4 करी 7 दिन जाईची मु कोन भाबी ये बहुत पॉइंट लिखिछि राइट तो एवला करी लिखो नेक्स्ट कोन रहला आउ कार किछि डाउट अछि पचार मोर जदी के मने पडुछि प्रेजेंटेशन रे मु कहली जदी कार किछि प्रेजेंटेशन ऊपर मु ऑलमोस्ट जार खाता भी देखुछि सब जिंस लिखि थाए फीडबैक रे ओके जोटी जोटी जहा जहा प्रॉब्लम अछि आउ जदी कार किछि देन ऑरल्स विल स्टार्ट कोन प्रेजेंटेशन रे फुल करूछो ओके शॉर्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कहली बहुत पिला बहुत लंबा लिखुछो सब बेले ट्राई टू राइट सम वे फॉरवर्ड अ सॉल्यूशन ओके ओके लेट्स सी जदी देखिबा आ किछि मन पडिबो हम कहबी हां विनीता को को सर आपण जो कहले कि एथिकल सॉल्यूशन लिखिबो सर तारो किछि एग्जांपल दे परिबे कहली ना देखो धर पडिछि कि एनवायरनमेंट ऊपर क्वेश्चन पडिछि हला एनवायरनमेंट ऊपर ଗୋଟେ क्वेश्चन पडिछि कोन तमे निजे को एड कोन हे परिबो एथिकल सॉल्यूशन को धर फॉरेस्ट फायर ऊपर क्वेश्चन पडिछि मु आउट के स्पेसिफिक कर देली कोन एथिकल सॉल्यूशन उडे परिबो तमे को के भी को इट शुड बी फ्रॉम योर ब्रेनस्टॉर्मिंग कोन हे परिबो के भी को बिकॉज़ समस्त मु लिखियार अछि sustainable agricultural practices यस एटा तो टेक्निकली साइंस एंड टेक हे गला एथिकल सॉल्यूशन पचार अछि गांधी जी जो कहिथिले ग्रीड आउ नीड ऊपर सेटा लिखि परियो सेटा भी लिखि परियो आ कोन लिखि परियो कॉन्शियस बोले ଗୋଟେ वर्ड अछि एथिक्स पेपर रे माने नहीं मोरल ड्यूटी टू यस कि जन लिखछन इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रिजर्व फॉरेस्ट ये भला हैला कॉन्शियस यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस और मदर अर्थ हैला जेतिकी वर्ड एथिक्स पेपर अछि यू जस्ट बाय हार्ट तमे जदी सब वर्ड मने रखि देला एथिक्स पेपर ना यू विल गेट समथिंग तमको किछि ना किछि मने पडिबा ही पडिबो सेटू ओके किछि ना किछि सेटू मने पडिबा ही पडिबो ओके virtue रे देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन virtue माने कोन कहलो character virtue is yes good character सद्गुण जाउ कहंदी है ना तो दिस आल्सो देयर आर सो मेनी good virtues ताकू तुम यूज करि परिबो कि हम पाखे रहया दरकार राइट वी आर द मिसक्रिएंट्स ना आमे ही ए सब कोन मेन मेड जते डिजास्टर होची वी आर रेस्पोंसिबल फॉर दैट राइट तो हमकु सुधेरा पे कोन होची हम पाखे हमर किछटा भलो गुण डेवलप होबार अछि राइट सम virtuous character should be developed then we can protect right environment ethics भी अच्छी टर्म ताकू यूज करो हला बुझ पारलो विनीता यस सर
ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ଏଠି 5ଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି, କଣ କଣ? social skill, ହୁଁ motivation, ହୁଁ social regulation, ହୁଁ empathy, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? and ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍, self awareness, like social regulation, sir, self regulation. ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେସନ। ୟାକୁ ତମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଦିସ୍ 5 words you can use so many, ମାନେ କେତେ ପ୍ଲେସେସରେ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ଦିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି, ଓକେ, ଆମର ବାକି କ'ଣ ରହିଲା? ଏଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ନା, କାହାର ଗୋଟେ ଅଛି ନା 7 କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ Seven ପଡୁନି। sins. Nodal principle. Nolan committee, sir. ନୋଲାନ କମିଟି, ହଁ, ତାର ଯେତିକି ୱାର୍ଡ ଅଛି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଇ ହାର୍ଟ କର। ମାନେ ଆକୁ ବି ଦେଖ, ଏଇଠି ବି ତମେ ଏ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କେସରେ ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବି ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍, ମାନେ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ପଲିସି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ୱେରେ ୟୁଜ ହବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଯେତେ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ରେସ୍ପନ୍ସିଭନେସ୍, ଓକେ, କନସେନସସ୍ Openness, ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, selfness, ହଁ, ହେଲା, ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ତମର ବାଇ ହାର୍ଟ ହବାର ଅଛି। selfless. ମାନେ ୟେସ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ତମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମନେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଏମିତି ମନେ ରଖ ଯେମିତି ସବୁ ପେପରରେ ତମକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ଏଥିକ୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓପେନ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, सोशल इश्यू, ओके, पॉलिटिक गवर्नेंस, बॉर्डर आमर जो इश्यू, सबुथिरे ये लगे। ठीक अच्छे, तो यही वार्ड गुड़ा यूज कर, माने जो वे फॉरवर्ड लिखुच अदर पेपर रे यही वार्ड गुड़ा किसी किसी यूज कर। ठीक अच्छे, बुझिल? नाउ विल गो टू टेस्ट 8, फर्स्ट टेस्ट 8 आम कम समय सारदे बिकज बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी। विल गिव लिटिल बिट मोर टाइम टू एथिक्स पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन देख कौन अच्छी, व्हाट इज नानो टेक्नोलॉजी। जदि डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी आई विल जस्ट टेल कि एआई लिखार अच्छी एंड विल गो। ओके, आम ताको मूव करबा आगु। व्हाट इज नानो टेक्नोलॉजी, एटी जस्ट लिखिबो डेफिनेशन व्हाट इज नानो टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन रे। डिस्कस द पोटेंशियल एप्लीकेशंस, challenges and ethical implications। देखो ये पूरा क्लियर कट 3टा डायमेंशन रे क्वेश्चन अच्छी, राइट? इन मेडिसिन, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन। ओके, व्हेन यू राइट एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन। ओके, पोटेंशियल एप्लीकेशन कहि हेडिंग देलो, ता तळे दीदीरा पॉइंट मेडिसिन रे, एनवायरनमेंट रे, कम्युनिकेशन रे, दीदीरा होची दीदीरा हो 3टा पॉइंट जतकी तुमको पॉइंट आसुची। ओके, देन राइट चैलेंजेस एज ए हेडिंग, सब हेडिंग रे मेडिसिन लिखिलो, मेडिसिन रे कोन चैलेंज अछि 2-3टा, एनवायरनमेंट रे कोन चैलेंज अछि 2-3टा, कम्युनिकेशन रे कोन अछि 2-3टा, राइट? देन एथिकल इम्प्लिकेशंस, एथिकली कोन कोन इश्यू अछि, ओके, इन मेडिसिन, इन एनवायरनमेंट, इन कम्युनिकेशन, राइट? तो 3टा हेडिंग हबो, प्रति हेडिंग रो 3-3टा सब हेडिंग हबो। जदि तुम कोटे सब हेडिंग रे पूरा पॉइंट आसुनी, धर कम्युनिकेशन रे एथिकल इम्प्लिकेशन तुमको पूरा मन पड़ुनी, यू कैन राइट एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन, ता तळे 2-3टा पॉइंट लिखि दियो जहां भी तुमको जणा अछि। ईच एंड एवरीथिंग रो सब पॉइंट हमको आसीबोनी, आसीबो बोली किसी गारंटी नहीं, आसीबो भी नहीं। केते पढ़िले भी मते भी पचारले मु सब जिनसर प्रॉपर 2-3टा 4-4टा पॉइंट लिखि परिबिनी, केही भी लिखंदिनी। ओके, बट यू शुड नो हाउ टू मैनेज। जदि तुमको पोटेंशियल एप्लीकेशन तो जणा थिबो सबुथिर, हला, चैलेंजेस भी तुम लिखि परिबो। जदि तुमे पूरा सब हेडिंग करके लिखि पारनो, देन यू कैन राइट 4-5 पॉइंट्स अंडर चैलेंजेस आल्सो, बट सेग्रीगेट करके लिखिले भलो, जेहेतु सी 3टा पर्टिकुलर सेक्टर रे पचारुची कौन चैलेंजेस अच्छी। ही इज नॉट आस्किंग चैलेंजेस इन अदर फील्ड्स, राइट? तो प्रति थिरे जदि दीदीरा पॉइंट तुम लिखुच, स्टिल यू कैन राइट 4 पेजेस। ओके, एटी कौन करिवो, दिस इज द ट्रिक। एटी कौन करिवो, धर एथिकल इम्प्लिकेशन लिखुच, तुमको बेसी पॉइंट जणा नहीं, देन मेक ए डायग्राम, हला, एथिकल इम्प्लिकेशन को लिखि दियो एटी, एमडी करी 3-4टा 5टा पॉइंट लिखि दियो। ओके, बुझ पारलो? एंड जदि तुम पाखे पेज भी नहीं, धर या लिखला 3 पेज हो गलानी, देन लास्ट पेज रे कर दियो। ओके, टाइम भी सेव हबो, तुमरो मैनेज भी हेजिवो, तुमको सबुतिर 2-3टा पॉइंट जणा नहीं, एंड क्वेश्चन रो डिमांड भी फुलफिल हो गला, राइट? एटा डायरेक्ट क्वेश्चन
आर कंटेंट रे किसी प्रॉब्लम नहीं लिखियारे भी तुमको किसी प्रॉब्लम होबनी. नेक्स्ट इज वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया for propaganda and recruitment by extremist group poses a significant threat to internal security. Okay, how can India develop a robust strategy to combat digital extremism without compromising democratic values? एक क्वेश्चन ने मैं बहुत पिलांगर खाता देखी nobody has written anything about democratic values. Okay, एथिरे तुमको क्लियरली लिखी जे without compromising the democratic values. मैं बहुत पिलांग खाता रे लिखी भी. There are some democratic values, for example freedom of speech, okay, for example equality, for example secularism. Okay, these are the I mean what this weaponization of social media is a threat to these things only. तमे देखुछ ना जते हमर ट्विटर रे वार होची, व्हाट्सएप रे वार होची, ओके, सोशल मीडिया रे जते भी वार होची, यूट्यूब वगैरह रे, they are threatening to this only: secularism, equality, freedom of speech. Okay, then I mean equality रे जीवो तमरा gender, okay, all these things. तो यही जिनस को ही ये सब थ्रेटन करूछन. So when he is telling कि it is no, without compromising democratic values, you write what are the democratic values also. तो ये कौन है परिवो इंट्रोडक्शन रे? Introduction can be what is internal security. See, GS रे there is no fixed strategy answer. It can be varied. Internal security also can be a introduction, and digital, what is that? Digital extremism also can be an introduction. Introduction तुम start करी पारिबो either with what is digital extremism or what is internal security. Okay, either or जोड़ा भी introduction लिखो. Then start with what is weaponization of social media. Okay, this should be your first heading. What is the weaponization of social media? कौन social media weaponization माने कौन? Example दे दे लिखियो. Okay, Twitter जो वार होची लिखियो, deep fake हमर चलची लिखियो, हला? आ कौन? Dark humor. So dark humor. Dark humor लिखियो, हला? These are same only. What is the challenge by digital extremism is nothing but the weaponization of social media only. Okay, ये कौन है पारुची? Deep fake होची, misinformation spread होची, okay, radicalization होची online रे, right? Then hate speech को spread करा होची, then honey trapping होची, okay. All these things are nothing but weaponization of social media or challenges by digital extremism. Okay, तापर कौन पचारुची क्वेश्चन कि से पॉइंट रे लिखिलो हाउ इट इज ए थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, देन हाउ इंडिया कैन डेवलप ए रोबस्ट स्ट्रेटेजी, देन नेक्स्ट पार्ट इज हाउ यू विल बिल्ड ए रोबस्ट स्ट्रेटेजी टू डील विथ दिस डिजिटल एक्सट्रीमिज्म विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर डेमोक्रेटिक वैल्यूज. ओके, तो it is देखो ये आंसर may not be लिखा ही ना पारे कि what is the democratic value, but when you write what is democratic value. Okay, तीन चारटा पॉइंट लिखो, these are the democratic values we practice, then what we can do. Okay, when we go to what we can do, write what is done already, then what else we can do. Okay, तो फास्ट रे लिखी पारिबो तमे एठी में भी लिखा है. Okay, first write what government is already doing. Okay, जदि हमर बे डिजिटल कोन हमर प्राइवेसी बिल अछि या तो आईटी एक्ट अछि, ओके, जहा जहा अछि तुम जानिछो तीन चारटा जिंस याकू डील करिया पई ताकू लेख. नेक्स्ट इज व्हाट स्ट्रेटजी वी विल डू. हमें नेक्स्ट कोन करि परिबा ए जो एक्सप्लेनेशन हम दोछु, डोंट राइट इन योर नोट्स. तमे तो नोट्स तो बनै थिबो ऑलरेडी, ए केवल पॉइंट तमे लेख मन रख. आम मॉडल आंसर केवल तुम ये सब हेडिंग गुड़ा मन रख. ओके, यू राइट द सब हेडिंग, गोटे लाइन रे तुम ताको एक्सप्लेन कर एग्जाम रे, एंड जदि एट एग्जांपल लिखा है यू राइट एन एग्जांपल. ओके, जेते तुम आखो पाखरे एबे रिसेंटली एग्जांपल हेची, एबे भी यूट्यूब को समन कराइतला कोर्ट केस रे. ओके, राइट दैट. ट्विटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी केते थर ताको पेनलाइज कलानी, सुप्रीम कोर्ट भी पेनलाइज करथिला, ताको लेख. ओके, देन कौन कौन हम मेजर नहीं परिबा.
ओके डिजिटल लिटरेसी बढ़ार अच्छी साइबर सिक्यूरिटी आमर मेन पावर ना बढ़ार अच्छी ओके एक्सपर्ट ग्रुप ना बढ़ार अच्छी काउंटर नैरेटिव गवर्नमेंट एक्शन नवार अच्छी ओके पॉजिटिव मेसेजिंग जोड़ा कहते भी करार अच्छी सो ऑल दिस थिंग्स आर द स्ट्रेटजी दैट वी शुड अडॉप्ट टू काउंटर दिस डिजिटल एक्सट्रीमिज्म ओके देन से कौच कि स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन डिजिटल एक्सट्रीमिज्म एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज ओके तो केमिति बैलेंस करिवो एडी किछटा पॉइंट लिखाई ओके इंटरनेशनल कोऑपरेशन देन इंडिपेंडेंट तमे बनेइबो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ओके इंडिपेंडेंट बॉडी जे तार ओवरसाइट करिवो ओके एंड लॉ एंड ऑल शुड बी ट्रांसपेरेंट ओके लॉ एंड रूल शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स ईच एंड एवरी जो आमर अच्छी प्लेटफॉर्म दे शुड गेट व्हाट taken to restrict online content should be proportionate to threat post माने proper platform को proportionally तमे treat करिवो so that देखो एबे कोन होची बेले बेले आसुची कि YouTube is what आमर जो Google अछि सी आमर सबु जिंस रे बेसी कोन इंटरफेयर करि रहउची माने तमे एंड्रॉइड फोन किनो ऑटोमेटिकली Google थाउची ओके तो proportionality इशू भी रहउची कि किछि किछि प्लेटफॉर्म अछंती दे आर ओवरली माने जति कि तांकर रहया कथा प्रेजेंस ताठो अधिक अछि ओके तो ताकू भी रेस्ट्रिक्ट करि परिबो तो एभला जहा जहा तुमको सॉल्यूशन देखा जाउची ताहा लेख तो एई क्वेश्चन रे दीटा मोस्टली दीटा पार्ट व्हाट इज द वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया ओके और व्हाट आर द चैलेंजेस ड्यू टू वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया एंड व्हाट स्ट्रेटजी वी शुड अडॉप्ट ओके एंड डोंट फॉरगेट टू राइट व्हाट आर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ओके सो मोस्टली दीटा पार्ट गोटे गोटे ए पार्ट रे लिखिदेल 6-7टा पॉइंट ए पार्ट रे लिखिदेल 6-7टा पॉइंट ए पार्ट को दीटा रे विभक्त करिवो गोटे होची व्हाट गवर्नमेंट स्टेप्स हैज टेकन आ काम को कोन करियार अछि ओके तो या बेले करी लिखिबो आ एग्जांपल दबो जतले भी तमे जो वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया लिखुछ ना गिव एग्जांपल ऑफ ऑल द व्हाट जत्ते कि हमर प्रॉब्लम सब भी होउची ट्राई टू राइट ऑल दैट इश्यूज इन ईच पॉइंट सब पॉइंट रे गोटे गोटे इश्यू माने लेख हला दिल्ली राइट्स हला राइट्स होची ओके देन हमर रिक्रूटमेंट होची रेडिकलाइजेशन होची ओके देन डीप फेक रे हम जहा क्रिएट करूचंदी ओके देन ट्विटर वार होची सोशल डिस्टर्बेंसेस होची ए सब गोटे एग्जांपल दे कि लिखियो राइट देन क्वेश्चन नंबर 3 India has set an ambitious target of land degradation neutrality by 2030 एथरे किछि डिस्कशन करियार नै कि एडा मते भी जणा नै माने एग्जैक्टली मोर मने नै यू जस्ट गो थ्रू इट लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी 2030 रे कोन कोन प्रोविजन अछि ओके इट अछि तो ऑब्वियसली मॉडल आंसर तो थिबो कोन कोन प्रोविजन अछि हला ताकू लिखिबो इट लिखाइ नि आंसर तमे थरे गूगल करके लिखो व्हाट देखो कि व्हाट आर द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी रो प्रोविजन कोन 2030 रो हला से प्रोविजन लिखिबो ए पॉइंट रे ए रे हला 5-6टा जहां भी तुमको मिलला 8 मार्क रो अछि तुमको 3-4टा 5टा जहां भी पॉइंट मिलला लिखिबो सेकंड होची चैलेंजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओके तो लैंड डिग्रेडेशन जोगु कोन कोन प्रॉब्लम एंड कोन एक्शन नै परिबा माने जे तो हमें गुड जिंस प्रॉब्लम अछि ता ऊपर एक्शन नेले कोन तुमको अपॉर्चुनिटी अछि obviously land को जदि तुम प्रोटेक्ट करिवो there are so many opportunities you can boost agriculture you can go for water reservation okay you can go for soil conservation okay you can go for what there are so many things related to agriculture water okay soil productivity export सब किछि इकोनॉमिकल बूस्ट हे परिवो okay तो opportunity कोन तुमको 4-5टा पॉइंट चैलेंजेस कोन इथिर अछि 4-5टा पॉइंट ओके तो opportunity लिखुछ you can write few government schemes also okay government कोन स्टेप सब नउची लैंड प्रिजर्वेशन पाई okay there are some schemes for example organic farming को हमें प्रमोट करूचंदी देखो पीएम प्रणाम हां policies or actions cannot be direct in terms of land reservation सब बेले ट्राई करो कि गोटे जिनसर जदी सॉल्यूशन लिखुछ एमिति न होई पारे कि एग्जैक्टली से ऊपर किछ एक्शन नि आइछि बट तार इर्द गिर्द किछ एक्शन नि आइथिबो जोथिरे कि से भी बेनिफिट होथबो हन नै कोन कहउतलो गोटे अर्चना पीएम प्रणाम जो हमर यस सब परंपरागत
प्रकृत कृषि पे यस पीएम प्रणाम हला ऑर्गेनिक फार्मिंग हला परंपरागत कृषि ओके जहाँ जहाँ वाटर रिजर्वेशन पे भी किछि किछि स्कीम अछि ओके दे आर आल्सो इंपैक्टफुल फॉर सॉइल कंजर्वेशन ओके तो एइथिरे जितल अपॉर्चुनिटी लेखुच कि राइट दीज आर द स्टेप्स गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकन ओके टू कंजर्वेशन आई मीन कंजर्व सॉइल ओके और लैंड डिग्रेडेशन को रोकिया पे हमर अछि एफोरेस्टेशन प्रोग्राम हले कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम भी अछि ओके कैंपा हां कांपा राइट सो दिस इज द फॉर्मेट एटा टिके खाली देखि कि मन रखिबो जेतु एटा गोटे प्रॉपर येटा माने कोन गोटे कॉन्फ्रेंस की कोन टाइप रो तो आकु केवल मन रखियार अछि जे इथिरे कोन प्रोविजन अछि बाकी challenges and opportunities are normal okay only thing is right examples okay जितला challenges लिखुच due to land degradation if you know few examples of for example पंजाब रो जो इश्यू चलछि हमर वाटर क्राइसिस हला देन हमर जो डिजीज वाटर बोर्न डिजीज बाकी सब जो डिजीज होछि ड्यू टू एग्रीकल्चर इन पंजाब ह्यूमन हेल्थ को जा इंपैक्ट करूछि सेहुडा हला ओके जहाँ भी जानिच ताको एग्जांपल कोट करो अपॉर्चुनिटी लिखला आडे गवर्नमेंट रो स्कीम हाउ इफ वी प्रिजर्व व्हाट अदर बेनिफिट्स ओके ए डायरेक्शन रे लिखिया अछि दैट्स इट ठीक अछि देन जीवा क्वेश्चन नंबर 4 what is EIA environment impact assessment okay it reconciles with the need for economic growth and environmental preservation comment it kon likhibo this is also very straightforward and simple देखो एठी होची comment माने तुम कोन लिखि कि छाडिबो comment माने कोन लिखिबो first of all what is EIA EIA कोन definition लिखिलो हला how EIA एटा 15 मार्क रो क्वेश्चन एथिर दीटा डायमेंशन रे लिखिछि व्हाट इज तार इंपैक्ट कोन इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपरे और तार इंपैक्ट कोन एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन ऊपरे गोटे डायमेंशन होछि इकोनॉमिक ग्रोथ आ गो डायमेंशन होछि एनवायरनमेंटल प्रिजर्वेशन ओके ड्यू टू EIA हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज हैपनिंग एंड ड्यू टू EIA हाउ एनवायरनमेंटल प्रिजर्वेशन इज हैपनिंग जदि तुम एथिरे चारटा पॉइंट लिखुछ if you are writing certain there are certain problems also okay no policy or no program is completely perfect jodi EIA रे किछि challenges अछि तमे जानुछ right or else जदि challenges लिखु न still write some way forward okay कि ए जिंस हमकु इंक्लूड करियार अछि EIA रे okay for example properly consultation होनी okay या तो हमर जो कोन ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन होनी तो ताकू लेखो कि ए यस यस हला पीपल्स पार्टिसिपेशन होनी ओके डिसेंट्रलाइज्ड वे रे काम करा होनी ओके तो ए जिंस को तुम मेंशन करो वे फॉरवर्ड लेखो तीन चारटा पॉइंट हो शॉर्ट रे हो बट वे फॉरवर्ड लेखो ओके जेतलो तुम एठी लिखिवो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन यू कैन राइट सर्टेन programs where EIA is implemented successfully okay जदि किछि जानिछ या तो खोजी की रख दि तीनटा जिंस खोजी की रख सी एग्जांपल्स यू हैव टू सर्च आल्सो समटाइम्स ताकू गोटे थरा खोजी की लिखि देलो नोट रे एंड वर्क इज डन माने तमरो मन रहला सब बेले एग्जाम रे फटकिना मन पड़िबो ओके एथरे भी इकोनॉमिक ग्रोथ रे तो मे नॉट बी सो एग्जाम माने किछि बहुत एग्जांपल ना आसी पारे बट स्टिल ओके कोड पर्टिकुलर जगह रे प्रॉपर्ली फॉरेस्ट को कंजर्व कराई छी ओके या तो वाइल्ड लाइफ को प्रॉपर्ली कंजर्व कराई की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई छी ओके इकोनॉमिक ग्रोथ भी हला बिकॉज़ इट सपोर्टेड द ट्राइबल ग्रुप्स ओके एंड ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर इट सपोर्टेड द व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ राइट तो एवला एग्जांपल भी देई परिबो एंड व्हेन यू राइट वे फॉरवर्ड एवला क्वेश्चन रे वे फॉरवर्ड यू शुड राइट मस्ट ओके एट पचार नि किछ वे फॉरवर्ड बट एवला लिखिया पड़ो तुमको एटी ठीक अछि नेक्स्ट व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन ओके एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन लिखिलो तार इंपैक्ट ऑन मेराइन इकोसिस्टम लिखिलो एटी देखो किछरा पॉइंट ओवरलैप हे पारे in what way oil pollution is particularly harmful for country like India when you write harmful for India
सेम दिस इम्पैक्ट ऑन मेराइन इकोसिस्टम भी आसीबो ओके तो एठी जहाँ तुमर मेराइन इकोसिस्टम ऊपर तार हार्मफुल इम्पैक्ट अछि फॉर इंडिया आल्सो दैट विल बी एप्लीकेबल बट देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक what negative things that is happening for India because our coastline होची 7000 किलोमीटर ओके मोर देन 7000 किलोमीटर हमर कोस्टलाइन तो ऑब्वियसली हम ऊपर इम्पैक्ट किछ अधिक पड़िबो हमर इकोनॉमी ऊपर इम्पैक्ट पड़िबो हला आ एउडा लेखिला बेले कोन तमे किछि किछि एग्जांपल एबे जेमति कि लंडन रे गोटे हेछि गोटे ऑयल टैंकर को गोटे आई थिंक कार्गो धक्का हेछि ओके जदि तुम न्यूज़ पेपर पढुथुबो काली ही हेछि आ से ऑयल टैंकर टा पूरा जळि जाइछि एंड दैट ऑयल हैज स्प्रेड इन द आई थिंक ईस्ट लंडन और कोड को पाखा पाखी हेछि एबे एग्जांपल तमे कोड करि परिबो राइट जदि रिसेंट रो किछि तमरो अछि एग्जांपल या तो एबे गोटे हेछि एग्जांपल ओके तो इटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन लिखिलो इंपैक्ट लिखिलो तार 5-6टा पॉइंट कि 7टा पॉइंट हला आउ पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर इंडिया ता तळे 5-6टा पॉइंट लिखिलो व्हेन यू राइट दिस next the second part you write some solution also okay एमती छाड़ दबनी से कोन पचारछु व्हाट इज इन व्हाट वे ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर कंट्री लाइक इंडिया एडी से पचारनी सॉल्यूशन कोन बट यू राइट सॉल्यूशन बिकॉज़ आगुड जिंस भी देखो ए जो 15 मार्क रो क्वेश्चन एथिरे तम बारे एते पॉइंट आसीबोनी जे तम 3 पेज लिखि दबो ओके तो तमे एटा को जदी गोटे पेज रे लिखिलो एटा को आ गोटे पेज रे लिखिलो नेक्स्ट हाफ पेज और गोटे पेज रे सॉल्यूशन लिखो ओके एमिति न हो जे एथिरे पूरा 10टा पॉइंट तुमको मन भी पड़िबोनी 10टा पॉइंट लिखले ए रिपीट भी हो तो बेटर वे हमकू सॉल्यूशन लिखियार भी अछि एंड हम जदी सॉल्यूशन लिखुचंदी हमर प्रॉपर्ली स्पेस भी मैनेज हो ओके एटा गोटे हार्डली गोटे पेज रे लिखा हो एटा भी हार्डली गोटे पेज रे लिखा हो रेस्ट हाफ पेज और वन पेज यू राइट सॉल्यूशन लिखि कि ताको कंक्लूड करो बुझि परला तो एई सब क्वेश्चन रे पचरा है नी सॉल्यूशन की वे फॉरवर्ड तुमको पचरा है नी बट यू हैव टू राइट हला then disaster management odisha is a model state in terms of disaster management in the country okay just statement देछि तमे ताकू explain करिवो कोन लिखिवो डेफिनेशन रे कि write some kind of fact okay किछि गोटे फैक्ट लेखो या तो डिजास्टर मैनेजमेंट को नेकी ओडिसा रो किछि गोटे अचीवमेंट को लेखि इंट्रोडक्शन रो स्टार्ट करो देन डायरेक्टली लेखो व्हाट आर द डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ ओडिशा कौन कौन ऊपर हमें फोकस करूछन व्हेन यू राइट द पॉलिसी यू राइट एग्जांपल्स आल्सो ओके जो जोड जोडी पॉलिसी लेखुछ धर हमें स्मार्ट वेदर सिस्टम करिसंदी हला तो ता तळे लिखिबो कि हमें जेतळ माने गुड एग्जांपल दे लिखिबो कि ड्यूरिंग साइक्लोन्स एंड ऑल वी गिव वेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक ओके तमे जीरो कैजुअलिटी लिखुछ एडा हमर गोटे टारगेट ता तळे दे लिखिबो कि फनी जेतळ हला हमर ऑलमोस्ट नॉन इज डायट ओके तो जेते हमर अछि एनवायरनमेंट सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट रो स्टेट गवर्नमेंट रो पॉलिसी रो जेते प्रोविजन अछि इंपोर्टेंट प्रोविजन जस्ट राइट in this type of question you can write a case study also at the end would case study lekhi ki hala फनी बोली लिखिबो या तो किछ गोटे रिसेंट रो लिखिबो जोडी कि हमें प्रॉपर्ली मैनेज करथिले एंड आउट जिंस मार्क करछो इन दिस क्वेश्चन यू कैन ड्रॉ अ मैप आल्सो यू कैन ड्रॉ यू मस्ट ड्रॉ अ मैप आल्सो इट जतो मैप ड्रॉ करिवो एक्स्ट्रा गोटे मार्क पाइबो मोस्टली नन हैज ड्रॉन द मैप माने के भी काई ए क्वेश्चन रो मैप ड्रॉ करछो मोर मन पडनी बट एवढा ही तुम जेतलो सेतमे हम कहूची स्टार्ट ऑफ द माने जेतलो क्वेश्चन पेपर मिलिबो सेतले तुम लिखि दियो कि मते एड मैप करिया अछि एड कोन मैप करियबो ओडिसा मैप कोड करलो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट गुडा मैप करे मार्किंग करबे यस हला ओडिसा मैप करलो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट देखेलो तमरो साइक्लोन सुनामी हला साइक्लोन मोस्टली देन आउ तो हीट वेव वगैरह न देखेले चलिबो बट एटलीस्ट साइक्लोन यू कैन सी हला हमर तो मेजर डिजास्टर होची ओडिसा रो साइक्लोन तो जस्ट गोटे ओडिसा मैप ड्रॉ करी कि कोस्टल डाग एमती करी कि देखि दबो जे हमर बालेश्वर स्टार्ट है कि गंजाम जाय कि साइक्लोन प्रोन एरिया ओके तो क्वेश्चन पेपर मिलु मिलु लिखिया अछि ओडा मने पडिबोनी बुझि परला मैप जदी तमर अभ्यास नथिबो मने पडिबोनी सो डू इट तमे जेतलो क्वेश्चन पेपर मिलुछि सडनली ताकू मैप मते ड्रॉ करिया अछि बोली साइड रे लिखि दबो ठीक अछि
Despite having strong IT service sector, India lacks in developing deep tech capabilities. Okay, analyze the structural and institutional factors behind the gap and suggest measures. Okay, ଗୋଟେ ହେଉଛି suggest measures ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି structural ଆଉ institutional କ'ଣ drawback ଅଛି ହେଲା। ତ first write what is deep tech ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ deep tech ମାନେ କ'ଣ, what is deep tech? deep tech ମାନେ କ'ଣ, ଯେତିକି ଆମର କଟିଂ ଏଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ଓକେ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଲା, ରୋବୋଟିକ୍ସ ହେଲା, IoT ହେଲା, ହେଲା ଆମର ଆଉ କ'ଣ କୁହ, blockchain, ଯେତିକି ହେଲା, ହଁ ବିగ్ ଡାଟା ହେଲା ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁରେ ଆମେ ସେତିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଯିବା କଥା। ଇଣ୍ଡିଆର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସବ୍ ଅପ୍ଟିମାଲ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ୟୁ ରାଇଟ୍ ଦିସ୍, ଏଇଥିରେ ବି ଯଦି ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜଣା ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓକେ, କି ଆମର ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏତିକି, କି ଆଇଟି ସେକ୍ଟରର ଜିଡିପିକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏତିକି କହିକି ବି ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ, ବିକଜ ଏଇଟା ଆଇଟି ରିଲେଟେଡ୍ ନା, ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ଇନ୍ ଆଇଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି वी आर डूइंग गुड। ओके, ବଟ୍ ଯେତିକି ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ କିଛି ହେଉନି, ରାଇଟ୍। ତ आईटी रे आमर परफॉर्मेंस ऊपर तुम इंट्रोडक्शन लिखि परिबो कि आमे एतिक एक्सपोर्ट करूचंदी कि या तो एतिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूचंदी या तो एतिक जीडीपी को कंट्रीब्यूशन करूचंदी। इन ईच वी आर डूइंग गुड इन आईटी, ओके, इन सर्विस सेक्टर। देन कोन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अछि, कोन पे हेई पारुनी हला, किछि किछि एड पॉइंट लिखा हिछि पढि भी थिबो, एउडा किछि मन रखिया सब माने नोट रे लिखिया दरकार नै, एथु के जस्ट मने रखो पॉइंट उडा। ओके, हमर फंडिंग रे आउ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड अच्छी, ओके, एंड फंडिंग रे प्रॉब्लम अच्छी, टैलेंट डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ ब्रेन ड्रेन। ओके, एंती नहीं जे हमरे टैलेंट नहीं, बट द टैलेंटेड पीपल आर गोइंग आउट। ओके, एबे भी गोटे रिसेंट देखियो गोटे सम कॉन्फ्रेंस और कोड हेइथिला कि मोस्ट द रिचेस्ट 1% wealthy people are going out. Okay, so who are they? Definitely they are the innovators, they are the big businessmen. Okay, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇକି ସେଟଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ରେଗୁଲେଟରୀ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ଆମର ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦିନ ଦରକାର, ଚାଇନା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁ ଟେକ୍ 1/10 of time रे चाइना रे सिंगापुर रे तुम गोटे कंपनी स्टार्ट करि परिबो। ओके, वी टेक मोर 10 times more time in India। ओके, सो ये सब प्रॉब्लम अच्छी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रे भी चैलेंजेस अच्छी। तो जहाँ जहाँ स्ट्रक्चरल चैलेंज अच्छी लिखिल से कौन पचार व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ओके, ताकू दीटा हेडिंग करके लिखिया दरकार नहीं, यू कैन राइट विथ वन हेडिंग कि स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ डीप टेक what strategy in India or deep tech capability in India, गोटे हेडिंग देलो तातो लिखिलो। एटा तो जनरल कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम अछि, ब्रेन ड्रेन अछि, R&D ऊपर फोकस बेसी हम करनांती, कोलैबोरेशन हमर कम अछि। ओके, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन कम अछि। देन व्हाट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमर कॉम्प्लेक्स, ओके, रेड टेपिजम अछि, एमदिया 6-7 पॉइंट हे गला। देन सजेस्ट मेजर्स कोन कोन करि हबो। ओके, कौन कौन करी हो तो लिखिबो, ऑलवेज राइट कि कौन होउची किछटा माने कौन स्टेप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट नउची भी। ओके, एमदी नाही जे किछि भी स्टेप निया होनी। सो जेतला भी पचारा होची व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक, यू ऑलवेज राइट व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग। ओके, एट जदी भी लिखा हेनी स्टिल यू राइट। ओके, तुम तो जानिबो जे केतेटा माने इंफ्रास्ट्रक्चर रे हम इन्वेस्ट करूचंदी, इनोवेशन पई एबे हमरो कोन इनोवेट इन इंडिया गोटे स्कीम अच्छी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम अच्छी। ओके, इनोवेशन पे गवर्नमेंट सब्सिडी दउची नुआ स्टार्टअप मानंगु। ओके, तो आउ आमे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रे धीरे धीरे सुधार आनुचंदी, हमर जो अच्छी बैंकरप्सी लॉ अच्छी। ओके, तो एई सब जिंस गवर्नमेंट ऑलरेडी करूची। ओके, इनोवेटर्स अवार्ड कोई के वर्ष अवार्ड दिया हिची। ओके, यंग इनोवेटर्स अवार्ड सर ये उत्कर्ष ओडिशा भी तो लिखियो जो मेक इन कॉन्क्लेव हेतला लिखियो नो डाउट। ओके, एनी
proactive steps we are taking towards innovation, towards building infrastructure, you can write. Okay, make in India conclave hochi, Odisha related भी किसी add करो सब answer रे, whether they are asking or not, in general terms you can write जहाँ भी ओडिशा रा भलो जिनस होची ना, you can write in any question. Okay, तो ये कौन स्टेप दरकार आ कौन स्टेप गवर्नमेंट नउची हला, ये बहुत सारा पॉइंट देखो 8टा पॉइंट लिखा है, तुम खाली पॉइंट गुडा को तुम शॉर्ट नोट्स रे लिखि रख. ओके, ग्लोबल अलायंस करिया दरकार हला, इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन करिया दरकार, आईपी हमर जो अछि हला ताकू स्ट्रेंथन करिया दरकार हला. ए एक्सप्लेनेशन तुम निजे लिखिबो, एते एक्सप्लेनेशन तो लिखि परिबोनी, दरकार भी नहीं, जस्ट गोटे लाइन में तुम देखो एक्सप्लेन करियो. टैलेंट पूल को हम स्ट्रेंथन करिया दरकार. ओके, प्लेटफॉर्म आने दरकार ओपन इनोवेशन पाई. तो एडी एग्जांपल दे लिखि दबो कि यंग इनोवेटर्स अवार्ड. एटा हम दोचंदी एबे हला. तो जोठे जो पॉइंट रे तुमको लागुच कि गवर्नमेंट रो किछ गोटे स्कीम अछि, तुम ताको कोट करो. जोठे लागुनी गवर्नमेंट रो किछ इथर एक्शन अछि, यू राइट कि एभला करिया दरकार. ठीक अछि. नेक्स्ट को जीवा. ओडिशा हैज बीन ए रोल मॉडल इन कॉम्बैटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. ओके, डिस्कस स्टेप्स टेकन बाय ओडिशा इन दिस रिगार्ड. एटा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जस्ट लिखिलो व्हाट इज LWE इंट्रोडक्शन रे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कौन, और किछ गोटे इंसिडेंट दे कि लेखो, गोटे फैक्ट दे कि लेखो ओडिसा रो कोड पर्टिकुलर इंसिडेंट जोटे कि ओडिशा माने हैंडल करिया रे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को सक्सेस हेछि. ओके, स्टार्ट विथ दैट. ओके, देन डायरेक्टली लेखो स्टेप्स टेकन बाय ओडिशा गवर्नमेंट. एथरे भी दीटा डायमेंशन रहबो, स्टेप्स टेकन बाय ओडिशा गवर्नमेंट, देन वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड एभला क्वेश्चन लिखिया पे बिल्कुल भूलिबोनी, आइदर सॉल्यूशन ऑन और वे फॉरवर्ड, बिकॉज वी आर नॉट एलिमिनेटेड. आमे एबे पंत आमे एलिमिनेट करने आंती. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज स्टिल देयर, वी आर स्टिल फेसिंग सम प्रॉब्लम. यस, इट मे बी रिड्यूस्ड. अब इथरे किछरा फैक्ट अछि. ओके, केते परसेंट थिला 2010 या 14 रे, एबे केते परसेंट डिक्रीज हेछि, केतेटा जिला आगु अफेक्टेड थिला, एबे केतेटा डिक्रीज हेछि. ए फैक्ट टिके दी तीन मन रखियो. ओके, बिकॉज ए पर्टिकुलर टॉपिक रु ना सब बेले एग्जाम रे क्वेश्चन आसे. सो ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट 2-3 फैक्ट फ्रॉम दिस. ओके, आ ओडिशा गवर्नमेंट रो जहां भी स्कीम अछि, एंड देयर आर सम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच आर इक्वली एप्लीकेबल टू ओडिशा, ताकू भी तुम लिखि परिबो. ओके, एमती नहीं जे ओडिशा गवर्नमेंट जो ने स्टेप नै ताकू ही लेखो. यू कैन राइट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हिच आर टेकन टू combat left wing extremism in the affected areas. Okay, जहाँ भी एडी गवर्नमेंट स्टेप नउछि, बस एतिक ही आंसर. ओके, एटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिला. देन EV. Okay, adoption of EV is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reduction of carbon emission? Okay, what are the key benefits compared to the traditional combustion of traditional combustion engine? Okay, तो इथरे भी दीटा रहला माने डायमेंशन. गोटे होची कार्बन रिडक्शन पई ये कोन हेल्प करूची, यार की बेनिफिट आ कोन अछि in comparison to the traditional engines. Okay, so start with EV. Okay, start with a data, or start with what is electric vehicle. Okay, or start with green energy. Okay, को भी जिनसर डेफिनेशन माने गोटे जिनसर स्टार्ट करि परिबो तुमर इंट्रोडक्शन, either with green energy or with EV or with some fact. Okay, जदि तुम जानिछो EV रे हम केते ग्रो करूछन कोन करूछन, start. Then contribution of EV in terms of reduction of carbon emission करके हेडिंग दबो. केमिति ये हेल्प करूछ, कोन कंट्रीब्यूट करूछ, को गैस हमर ट्रेडिशनल इंजन रो बाहरुची, को थरे इथरे हमर बाहरुनी, केते हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करूछंदी, केते हम फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करूछंदी. तमे ताको लिखिलो. एथरे हार्डली 3-4टा पॉइंट आसीबो. ओके, when you write benefits in comparison to the traditional engine, here you write all the benefits. Okay, economic benefit hella, environment benefit hella, social benefit hella, okay, export import वाला benefit hella, you write all the things. Okay, एडी केते benefit हे परिबो भाबो. इकोनॉमिक ग्रोथ रे तो कंट्रीब्यूट करले ही, एनवायरनमेंट रे तो तुम जानिछो ही, एडी भी लिखिबो. ओके, बाकी हमरो इंपोर्ट बिल को ये कमेबो,
राइट आ कहीं परिवो हमर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अच्छी बिकॉज आम पेट्रोल जो पकाती बहुत पैसा खर्च हुए राइट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम माने ये हेल्प करिवो तो एटा तुम लिखिला आडू इकोनॉमिक बेनिफिट सोशल बेनिफिट एनवायरमेंटल बेनिफिट ओके एमिति हेडिंग करके लिखिवो माने कौन कि देखो जोठी जोटा बेस्ट हो पारिवो से उपाय आंसर लिखले भलो जदि तुमको लगुच जे ये तीन चार्टा मोर हेडिंग हो पारिवो देन राइट तीन चार्टा हेडिंग लिखिकी तातले पॉइंट लिख तीन चार्टा को डिवाइड कर दियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सोशल ओके करिकी तातले तीन टा पॉइंट लिख ओके तो हमको लागिला जे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन रो बेनिफिट तुमको जଣା अछि राइट तो तुम आंसर रो स्ट्रक्चर टा आउटिके बेटर देखा जिवो बुझ पारलो देन लास्ट क्वेश्चन रेगुलेटरी आमर अछि जीएम ऊपर ओके एनालाइज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया तो कौन कौन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अछि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को नेकी जीएम क्रॉप को नेकी हला कि केमिति बिल माने को किए ताको एक्सेप्ट करे को कमिटी ताको अप्रूवल दिए ओके केमिति से फाइनली मार्केट को आसे ओके अप्रूवल लेकी केमिति आसे गोटे अछि ना जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी ना कोन अछि तो एई गोटा स्टेप लिखिबोटा 5 मार्क रे अछि ओके गोटे फ्लो चार्ट करके लिखि दियो नले जस्ट गोटे फ्लो चार्ट करो स्टार्ट विथ दिस आप ये करिवो एमती कि मार्केट को आसीबो ये होची रेगुलेटरी बॉडी ये होची अप्रूवल बॉडी ओके ये होची इंप्लीमेंटेड बॉडी एमती कि आसे एडा 5 मार्क रे गला देन पोटेंशियल बेनिफिट यार कोन अछि आउ रिस्क कोन अछि ओके फास्ट लेखो रिस्क देन लेखो बेनिफिट और वाइस वर्सा फास्ट बेनिफिट भी लेखो रिस्क लेखो देन वे फॉरवर्ड लिखियो दी तीनटा पॉइंट हला बिकॉज दीज आर नॉट कंप्लीटली अप्रूव्ड स्ट्रेटजी एबे पर्यंत सब जिंस रे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जिंस को एक्सेप्ट करि नांती दैट मींस व्हाट देयर आर सम रिस्क हना नहीं तो रिस्क केमती जीवो ता पे किछ वे फॉरवर्ड दरकार कंसेंसस बिल्डिंग दरकार प्रॉपर आरएनडी दरकार ओके बेस्ट प्रैक्टिसेस जोड होची से डाटा दरकार हमको ओके सो दिस वे वी कैन मूव फॉरवर्ड तो ये वे फॉरवर्ड भी लिखियो 10 मार्क क्वेश्चन अच्छी तीन चार्टा बेनिफिट लेख तीन चार्टा रिस्क लेख दी तीन पॉइंट वे फॉरवर्ड लिख ए वाला क्वेश्चन रे वे फॉरवर्ड लिखियो ही लिखियो इफ दे आर नॉट आस्किंग आल्सो यू राइट डोंट जस्ट लीव विथ रिस्क लिखी छाड़ दियोनी ओके टेक सम माने दी तीन पॉइंट हो चार्टा पॉइंट हो वे फॉरवर्ड डायरेक्ट जस्ट आरएनडी दरकार ओके कंसेंसस बिल्डिंग दरकार प्रॉपर डाटा कलेक्शन दरकार एति तो लिखिबो शॉर्ट रे तीन चार्टा पॉइंट लिखि छाड़िबो ठीक अछि ए पेपर आउ किछ कार डाउट अछि और एल्स विल गो टू टेस्ट 9 एथिक्स पेपर को जिवा सर गोटे डाउट थिला साइंस एंड टेक पई जति कि मेंस 365 रो जति कि टॉपिक अछि सेति कि कवर करले ठीक ठाक हे जिवो त मोस्टली सफिशिएंट ओके जदि तुम पाखे टाइम अच्छी देन तमे मंथली मैगजीन रो केवल साइंस एंड टेक पार्ट जो 5-7 पेज 10 पेज थाए हैला जाय कि ओवरऑली लास्ट 4-5 मास रो बेसी नहीं 5-6 मास रो हार्डली केते 10 पेज थाए गोटे मंथली मैगजीन हां नहीं तो लास्ट 5-6 मास रो तुम देखि पारिबो सेइथरे बहुत टॉपिक कोन ओवरलैपिंग तो हबो ही ओवरलैप भी 365 हो हां तो किछटा टॉपिक ओवरलैप भी होउची हाँ हम ही कारण 365 रे टॉपिक जगह कोड आसी कि मंथली मैगजीन रो ही ताके 365 को आनचन देरी इंपोर्टेंट बाची है ना जदी तुमको 6 मास रो जदी धर 20-25 टा टॉपिक मिलला मंथली मैगजीन रे सेही थरु 10-15 टॉपिक तमरो 365 रे थिबो बाकी जो टॉपिक गुडा नाही ताकू तमे मैगजीन रो देखि परिबो बेसी जायनी 5-6 मास रो भी गले न आउ देखि की पढिबो सी एवरीथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड से जो मंथली मैगजीन रो भी सब जिंस दरकार नै तमे देखि की जानियार अछि जे एई थरु क्वेश्चन आसुची कि नै डोंट ट्राई टू मक अप एवरीथिंग देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन द मंथली मैगजीन जो थरे कि केबे जीवन रे क्वेश्चन आसनी कि आसीबो हैला तो सेही टॉपिक भाबी की 10-12 टा आमे भी तुमको दबो ओके वी विल ट्राई टू गिव एक्चुअली टाइम हमको जमा होनी जदि हबो स्टिल वी विल गिव सम टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक एई वर्ष पय ओके तुम शेयर करो कि लास्ट 6 मास रो मंथली मैगजीन नु किछटा जस्ट पिक करो पिक करके ताकू
ऐड कर दियो सेति हला नोट्स बनै दबो शॉर्ट नोट्स किछिटा खाली मान देखो एक्चुअली कोन कि साइंस एंड टेक रे टिके टेक्निकल पार्ट लिखियो पड़े आंसर रे ओके तो सेई छोट छोट जिंस यदि किछिटा नुवा नुवा हेइची ताक खाली बुझी देई था जेटा कोनटा ओके फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एनर्जी एटा तो केमिति आछी तार इंप्लीमेंटेशन कोन आ कोन ए टाइप रो छोट छोट जिंस हला बेसी नहीं हार्डली आ 10 12 15 टॉपिक में भी तमरा ऐड हो ओके Yes, sir. Yes, sir. then we'll go to test 9 हला टेस्ट 9 स्टार्ट करियो हला एथिक्स पेपर सो बहुत पिला फर्स्ट ऑफ ऑल मु कहबी कि यू हैव रिटन वेरी गुड आंसर ओके बहुत पिलांकर आंसर एक्चुअली बहुत भलो लिखिछो गोट जिंस आई डोंट नो तमे टाइम रे लिखुछो कि नहीं हां आकाश को सर एक्चुअली एथिक्स रे डे प्रॉब्लम हो जी केस स्टडीज गुडा सर मैं जानि पारनी केमि कोन लिखा जियो से गुडा सर बहुत टॉपर्स को भी देखली से माने डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो लिखि जंदी कोडे कोडे जगह स्टेक होल्डर रु स्टार्ट कर जंदी किछि जगह इंट्रोडक्शन छोटो माने गोटे डायग्राम कर दो सर सेटा बुझी पारनी माने केस स्टडीज टा केमि कोन लिखि जंदी समस्तंगर अप्रोच अलगा अलगा ओके तमे समस्तंग अप्रोच फॉलो करि परिबो तुमको जो अप्रोच टा ठीक लागुची ना तमे सेटा फॉलो करो समस्तंगर अप्रोच अलगा सब अप्रोच रे मार्क मिले एमती नहीं जे देखो जीएस रे देयर इज नो स्टैंडर्ड पैटर्न ओनली थिंग इज योर कंटेंट शुड बी गुड एंड इट शुड हैव ए गुड फ्लो जदि अच्छी तमे मार्क पाइबो एनी फॉर्मेट रे तमे लिखो ओके ओनली थिंग इज कंटेंट शुड बी गुड सर यू शुड आपको जस्ट गोटे दीटा फॉर्मेट कहि दियो केस स्टडी में सर केस स्टडी पे ना ए आंसर में नहीं सर केस स्टडीज पे सर आपण गोटे की दीटा फॉर्मेट कहि दियंतु सेही फॉर्मेट ही सर हमको जोटे सुटेबल लागियो सेटा रे सर लिखियो सर मु अपन एक्चुअली जानि भी परनी जे माने सेटा केमदी कोन अटेंड करियो कोड देखो स्टार्ट केस करियो स्टडी केमदी एक्चुअली मु एग्जाम रे तुमको पचारि ही नहीं ओके केस स्टडी इथरे पचारा ही नहीं केस स्टडी पर मु कहि देबी बट हाउ टू स्टार्ट एंड ऑल केस स्टडी पर मु कहि देबी ओके आउ जतला हमर मेंस आ माने जतला सॉरी फुल लेंथ टेस्ट हबो स्टार्टिंग टेस्ट रे हम दबा केस स्टडी दी तीनटा ओके केस स्टडी दबा एंड हाउ टू अप्रोच एंड ऑल आई विल टेल ओके केस स्टडी भी कोन थाय कहलो देखो फर्स्ट रे उडे पैराग्राफ देथिबो देन ता तळे दी तीनटा पॉइंट रे क्वेश्चन पचराइथिबो हो ना जेमिति तुम ए आंसर लिखो ना मो मतरे सेमिति ही लिखो नो नीड टू राइट एनी स्टोरी और एनोटेशन किसी लिखे दरकार नहीं जेमिति तुम ए आंसर लिखुछो सेमिति ही लिखो बट विल टेल आई विल टेल ओके मु तुमको कहबी केमति लिखिबो गुड दिना केस स्टडी एक्चुअली नेले ही जणा पड़ियो केमति लिखा हबो एट तुमको किसी केस स्टडी देही नहीं ए टेस्ट रे ओके केस स्टडी मु तुमको देबी फुल लेंथ रे दीड जगह फुल लेंथ रे आई विल ट्राई टू गिव दी तीनटा लेखे केस स्टडी तुमको देबी ओके आज जदी हबो मु तुमको कहि देबी हला केस स्टडी किंतु बाय एंड लार्ज किसी एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं केस स्टडी में केस स्टडी भी तमे सेमिति स्टार्ट करिवो जेमति एठी केस स्टडी रे एया लिखिवोनी जे जो किछि पिला लेखंती माने कोन किए स्टेक होल्डर अछंती सेडा लिखिया दरकार नहीं तमे ए पचारछो तो स्टेक होल्डर रु किछि स्टार्ट करजंती किछि सर माने इंट्रोडक्शन दो नॉर्मल हमें जेमति जीएस रे आंसर गुडा लिखु जंती सेमति भी स्टार्ट करजंती सेडा सर किछि जानि होनी डोंट राइट विथ स्टेक होल्डर देखो माने किछि किछि पिला लेखंती कि फर्स्ट रे केते जण स्टेक होल्डर अछंती के माने ए पर्टिकुलर केस रे डोंट राइट लाइक दैट आई मीन लिखि तो पारिबो मना नहीं सब फॉर्मेट ठीक बट मो फॉर्मेट होची यू राइट द वे यू आर राइटिंग दिस नॉर्मल आंसर जेमिति ए आंसर लिखुछो केस स्टडी आंसर भी एमिति ही लिखो हला इंट्रोडक्शन दियो आउ माने किछि किछि जगह इंट्रोडक्शन दबो किछि जगह डोंट नो नीड टू राइट इंट्रोडक्शन जदी क्वेश्चन ऊपर डिमांड करू जदी क्वेश्चन से बळे अछि जनरल क्वेश्चन पडिछि देन यू कैन राइट एन इंट्रोडक्शन जदी क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक पडिछि जे ए लोकटा कोन करिया कथा ए सिचुएशन रे ओके गोटे केस देछि गोटे कैरेक्टर देछि या तो गोटे स्टेक होल्डर अछि जे कि ए सिचुएशन में कोन करिया कथा देन यू स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली फ्रॉम दैट पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू जे से कोन करिया कथा राइट डायरेक्ट सर से क्वेश्चन को भी स्टार्ट करियो हां डायरेक्ट स्टार्ट करो नो नीड टू राइट इंट्रोडक्शन आल्सो ओके सर ठीक थैंक यू कारण 20 मार्क रो केस स्टडी रे तरोड 20 मार्क रो केस स्टडी अछि सेतिर तीनटा की चारटा क्वेश्चन पचराई छि ओके ता माने कोन गोटे क्वेश्चन 5-6 मार्क पडुछि नो नीड टू राइट इंट्रोडक्शन एंड ऑल डायरेक्ट स्टार्ट करो जहा से क्वेश्चन पडुछि डायरेक्ट
अटैक कर क्वेश्चन को माने डायरेक्ट ताको आंसर लिख जदि दीटा क्वेश्चन पड़ी है 10-10 मार्क पाइल माने देखो डिवाइड तुम्हें भी जानियार अच्छी जो क्वेश्चन पढ़ुची केते मार्क रो पढ़ुची तो केते मार्क रो क्वेश्चन मु इंट्रोडक्शन लिखिबी 5-6 मार्क रो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन लिखे दरकार नहीं जदि 10-10 मार्क रो भी दीटा क्वेश्चन पड़ी धर आ गोटे क्वेश्चन पड़ी कि एक लोकटा सिचुएशन कौन एक्शन नबा था नो नीड टू राइट एनी इंट्रोडक्शन जस्ट राइट द सॉल्यूशन ओके जदि पड़ी ए वाला सिचुएशन कि ए वाला जो हां को नहीं सर किछ ओके 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 मोर वॉइस क्लियर अछि ना यस सर क्लियर सर जदि धर गोटे एथिकल डायलेमा वाला क्वेश्चन पड़ी हला देन यू राइट व्हाट इज एथिकल डायलेमा इन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट ओके जदि गोटे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस ऊपर क्वेश्चन पड़ी हला देन यू कैन राइट व्हाट इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस ओके जदि गोटे डिजोनेंस ऊपर एथिकल डिजोनेंस ऊपर क्वेश्चन पड़ी देन यू कैन राइट व्हाट इज एथिकल डिजोनेंस हला जदि गोटे इमोशनल इंटेलिजेंस ऊपर पड़ी गोटे पैराग्राफ देछि यू कैन राइट व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस जदि किछि गोटे ब्रॉडर टॉपिक ऊपर पड़ी तमे सेटा पढला पर जानुछ then you can write the introduction on the basis of the question then तमे तार जहा पचारछि ताको टारगेट करके आंसर लिखियो जदि सेमि तुमको किछि भी लागुनी गोटे पर्टिकुलर इंसिडेंट देछि आउ ए लोकटा कोन करिया कथा then you write the solution जदि लिखिला कि ए लोकटा एथिकल डायलेमा रे अछि then ये कोन करिया कथा then you write what is ethical dilemma first then based on the situation कोन एथिकल डायलेमा रे जहा भी सॉल्यूशन अछि सेही आंसर से ही सॉल्यूशन हो जतला तुम गोटे लोक एथिकल डायलेमा रे थाए तापे जहा भी सॉल्यूशन अछि से पर्टिकुलर केस स्टडी रे से ही हो सॉल्यूशन ओनली थिंग इज सिचुएशन बेस्ड हमें तब ऐड करके लिखियो होना नहीं कि रामू की हरि की दाम जाना दीछि सी या करिया कथा कोई सॉल्यूशन दो होना जहा जहा तुमको से भीतर दिया सिचुएशन बुझ पारलो हां सर ओके सर आमे डिस्कस करिया पुनी इन डिटेल व्हेन वी विल टेक ए क्वेश्चन जतला आमे फुल लेंथ टेस्ट मु स्टार्ट टेस्ट माने फर्स्ट टेस्ट नहीं देबी हला दि तीनटा हमर केस स्टडी देबी तम वेल इन एडवांस हम लोग डिस्कस कर दो ओके तो हमें मूव करिया व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन होचे हमर व्हाट इज मेटा एथिकल इंक्वायरीज इनटू द नेचर ऑफ मोरालिटी ओके meta ethical inquiries into the nature of morality have a direct impact on practical governance decisions discuss the statement with reference to political implementation challenges okay so start with what is meta ethics okay introduction should be what is meta ethics then taro practical governance upare kon impact okay when you follow meta ethics how that is impacted on practical governance okay. first lekila what is meta ethics hala then tara influence on governance hala ede tikke jehetu what technical term you should know first what is meta ethics au exam re jodi tame गोटे जिंस को जानी परनो फॉर एग्जांपल दीटा क्वेश्चन आसी आइदर और तुमको दीटा जगह जाना नहीं बट लिखियार अछि ओके एक नंबरटा भी जाना नहीं तार और जो पड़छ दुई नंबरटा हेडा भी जाना नहीं एमती हुए okay so how to handle if you do not know what is meta ethics just write what is ethics leave माने छाड़ीबोनी क्वेश्चन बिल्कुल जदी तुमको दीटा क्वेश्चन भी आसुनी माने छाड़ीबो ही नहीं किछि ना किछि लिखि दबो what is ethics लेखो तार impact on governance लेखो still you will get some mark okay बेल कोन होय कि हमको आसेनी से प्रेशर हम छाड़ दियंती क्वेश्चन बिल्कुल माने बिल्कुल केबे भी एग्जाम रे गोटे भी क्वेश्चन छाड़ी आसीबोनी जहा आसी से लेखो ओके एमि तो नहीं जे किछि आसीबन ना मेटा तुमको टर्म डा न आसी पारे व्हाट इज एथिक्स यू राइट ओके और तार लेखो इन्फ्लुएंस व्हाट इज ऑन गवर्नेंस ओके तो एक क्वेश्चन कोन लिखियार अछि व्हाट इज मेटा एथिक्स लिखिलो देन तार इन्फ्लुएंस कोन गवर्नेंस पर लिखिलो तीन चारटा पॉइंट विथ एग्जांपल ओके देन नेक्स्ट पार्ट से कोन पचार थिला डिस्कस विथ रेफरेंस टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस ओके तो जतला में पॉलिसी इंप्लीमेंट करंती कौन चैलेंजेस आछे इन टर्म्स ऑफ एथिकल चैलेंजेस ओके कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिकल थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल नीड्स माने जतला हम इंप्लीमेंट करंती फॉर एग्जांपल तुम देखियो गोटे जगह रे कि गोटे जिंसर तो माने नीड तो थिबो ही सेठी बट सेठी किछि रे एथिकल टर्म्स तमरो वायलेट होतुओ तमरो कॉन्शियस तुमको कॉल दो नथुओ जे जिंसर एडी करिया कथा बट तुमको करिया पड़तुओ
ओके समटाइम्स यू नो माने पॉलिटिकल बॉस को तमरा माने कोन की ताकू कूल करिया पई माने ताकू काम करिया पई तुमको एमती किछिटा माने कोन से टाइम रे नबा को पड़ियो एक्शन या तो कोन जोटा कि तुमको एथिकली तुमको भितरु से एक्सेप्ट करनुथो तुम एक्सेप्ट करि परनुथो जे मते एटा करियार अछि बट तुमको करियार अछि ओके सो दैट टू मैनेज द सिचुएशन बेले बेले हमें लाठी चार्ज करंती हला किछि कि सिचुएशन रे लाठी चार्ज करा हुए लाठी चार्ज कोन एथिकली एक्सेप्टेबल नो है ना नहीं it actually acceptable no but to control the situation you have to do it okay for greater good जो लिखा है for greater good okay in riots in violence okay এই सब सिचुएशन में तुमको एमती किसी माने डिसीजन नबा को पड़ियो जोटा कि ethically they are not acceptable okay but for greater good you have to take some decision there are ethical dilemma situation where either of the decision is harmful माने एमती गोटे सिचुएशन आसीबो in bureaucracy both decisions are तुमको लागुथो भूल बट तुमको से दीटा सिचुएशन गोटे चूज करियार अछि गोटे डिसीजन को चूज करियार अछि okay so ethically that may not be correct but when you compare with the other decision you have I mean तुम भाबुचो कि ए डिसीजन ना मोर बेटर ओके तो ये लिखिबो ये टिके टेक्निकल अछि व्हाट इज मेटा एथिक्स तो तमे जस्ट आगु पढो मेटा एथिक्स माने कोन वंस यू अंडरस्टूड द मीनिंग तुमको जाना पड़िबो कि सॉरी गवर्नेंस रे तार इम्प्लीमेंटेशन कोन एंड चैलेंजेस कोन व्हेन यू राइट द चैलेंजेस जेमति मु तुमको कहली ओके वंस यू राइट द चैलेंजेस राइट सम वे फॉरवर्ड ओके डोंट लिव विथ ओनली चैलेंजेस किछिटा वे फॉरवर्ड लिखो या तो किछिटा सॉल्यूशन लिखो ओके चैलेंजेस जोडी अछि सॉल्यूशन होछ तार नेक्स्ट स्टेप ओके सो राइट सम सॉल्यूशन और सम वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूड बुझियला जस्ट गो थ्रू द आंसर इट्स बिट टेक्निकल सो एटा को जस्ट बुझियार अछि वंस यू अंडरस्टूड देन इट इज इजी ओके Second होची compassion without competence in public service can lead to greater harm than good. So the term दोची compassion or competence. Discuss the statement with reference to emotional intelligence in governance. Okay. So how emotional intelligence will help you, okay, to bring the best of the two. Okay. So it कौन लिखियार अछि introduction you write definition of compassion and competence it is correct you write definition of emotional intelligence that is also correct okay kiye pila mane ko man likhicho started with emotional intelligence kichi pila started with compassion and competence both are correct okay so introduction will be either definition of both compassion and competence or definition of emotional intelligence okay then write ki only why only compassion is not enough okay few point you write only compassion is not why not enough or why compassion without competition is without competence is not good okay how it will create more harm that should be the first heading okay एठे तुमको एक्स्ट्रा दिया हिच देखो एक्चुअली कोन कि मॉडल आंसर वी गिव एक्स्ट्रा इफ यू राइट इंपोर्टेंस ऑफ compassion also good but if you do not write importance of compassion still okay you start with how compassion without competition is a riskful job okay write that then तीन चारटा पॉइंट आ तळे लेख कि कोन कोन हबो कंपैशन तमर अछि बट कॉम्पिटेंस नै माने कोन तमर स्किल नै केवल करियर जुनून अछि तो तम भूल टूल काम करिवो इनएफिशिएंट डिसीजन नबो बेले बेले ओके देन अजानतर किछि ना किछि भूल कर दबो बिकॉज़ कंपैशनेट तमे अछो बट तमर स्किल नै तुमको प्रॉपर जिंस जणा नै ओके टेक्निकल जिंस ओड तुमको जणा नै तमे चडी पडला ताकू ठीक करिया रे कोन हबो अजानतर किछि भूलै पारे ओके misappropriation or misallocation of resources habo accountability properly fix haboni okay because without skill we have done the work okay then एटा ही तार consequence एटा जतोल लिखिबो obviously तार consequence कोन हबो माने erosion of public trust harmful outcome जा भी हबो हला दि तीनटा point then here you can write with competence
how better you can do, माने how you will address that problem with competence, compassion and competence को नेकी जो तुम काम करथांतो ताले कोन हेई थांता दी चारटा पॉइंट से भी लिखि पारिबो. ओके, नेक्स्ट इज हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू टू कंबाइन दिस बोथ इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस. ओके, एठी इमोशनल इंटेलिजेंस पचरा है कि इन टर्म्स ऑफ compassion and competence how emotional intelligence will help you to balance both. Okay, जदि तुम इमोशनली इंटेलिजेंट अच्छ ताहले कौन हबो. फॉर एग्जांपल तुमर कोड जिंस रे करियर बहुत इच्छा अछि बट तुमर स्किल नै, तो ए इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन विल अंडरस्टैंड कि मोर करियर सिना बहुत इच्छा अछि बट एक्चुअली मु ए जिंस पय बेस्ट फिट नै, सो आई विल टेक द एडवाइस ऑफ समवन हु इज बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब. ओके, तो ये कौन है कंपैशन आउ कॉम्पिटेंस को सी बैलेंस करेला. योर इमोशनल इंटेलिजेंट विल टेल यू आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड, आई एम जेन्युइनली व्हाट compassionate to do the job, but I am not skillful, I am not expert, so I will take the advice or I will take the help of a person who is best fit for that job. Okay, so it कौन है जिनसो को बैलेंस कराला. तो इमोशनल इंटेलिजेंट रो जो पांचटा पॉइंट अच्छी, पांचटा डायमेंशन अच्छी, से पांचटा डायमेंशन भितर तुमको सी मैनेज करेबो या तो बैलेंस आउट करेबो बोथ कंपैशन और कॉम्पिटेंस को कि हाउ यू विल डू ए जॉब इन टर्म्स ऑफ बेस्ट आउटकम. ओके, ताकू लिंक करके लिखियो. तो ये कौन कौन लिखा हो, फर्स्ट लिखिलो व्हाट इज इंट्रोडक्शन रे आइदर कंपैशन और कॉम्पिटेंस डेफिनेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस डेफिनेशन. नेक्स्ट, हाउ कंपैशन विदाउट कॉम्पिटेशन इज हार्मफुल, कौन कौन हो पारिबो तार कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन हबो, दी तीनटा पॉइंट. नेक्स्ट हेडिंग होचे हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू टू बैलेंस compassion and competence in terms of governance, in terms of good governance. Okay, ता तळे 500 पॉइंट लिखिलो. सेडी एग्जांपल दबो, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एग्जांपल दियो, बेस्ट पॉलिसी मेकर एग्जांपल दियो, बेस्ट बिजनेसमैन एग्जांपल दियो. ओके, जो माने कि बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस एंड बिकॉज ऑफ देयर कंपैशन हैज डन ट्रेमेंडसली गुड जॉब और अचीव्ड समथिंग गुड. ओके, बहुत पिला एक्चुअली बहुत बड़ा बड़ा एग्जांपल लिखिछो. ओके, टीएन सेशन हैला, हमर जो कौन थिले मेट्रो मैन हैला, या तो जते जो भलो भलो ब्यूरोक्रेट अछंती, बिजनेसमैन अछंती. ओके, केते सारा आईएएस अफसर हेले. ओके, से मानकर ना सब माने किछ गोटे लिस्ट बनाओ 10 कोटीटा लोकर ना. ओके, वुमेन 3-4 जन वुमेन एथलीट, ओके, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, देन तमर जो मेडल विनर अछंती, प्लस किछिटा टेलीविजन पर्सनालिटी, किछिटा बिजनेसमैन, किछिटा ब्यूरोक्रेट. ओके, आर्ट एंड लिटरेचर किछिटा गुड पर्सनालिटी. ओके, सम गुड पॉलिटिशियन वर्ल्ड वाइड. एमती गोटे लिस्ट बनै कि रख जो मानक कि तुम ए भला क्वेश्चन रे चिपकै परिबो, जोटी जा नाटा तुमको सुटेबल लागला ताकू तुम जल्दी ऐड करि परिबो. ओके, गोटे लिस्ट बनै कि रख सो दैट तुमको इजी होबो आंसर लिखला एडे फटकिना ता नाटा ए जिंस रे ये जिंसटा करिछि, अचीव करिछि. ओके, ताकू ऐड करि लिखियो. बुझ परलो. Then third we'll go ki probity and integrity are often used interchangeably in public service. Examine the subtle difference between these concepts, their implications for ethical governance. Okay, to start with, what is probity and what is integrity? Definition of probity and definition of integrity. Okay, that is the start. Sorry. Okay, start with what is probity and what is integrity. Then probity और integrity of scope कौन, application कौन public service रे. Okay, probity थिले जन कौन करिवो, integrity थिले जन कौन करिवो, you give, I mean you write with example. Okay, माने तमरो integrity थिले तम केमती action नबो. Okay, जेते अछि probity रो 7-8टा अछि ना तार ये कौन ता कोनती कि कौन ता कोनती डायमेंशन. ओके, तो ये पर्टिकुलर डायमेंशन रे if you have probity in governance, what kind of actions you will take. ओके, ताको एग्जांपल दे लेखो, गोटे पर्सन जदी इंटीग्रल अछि तार इंटीग्रिटी से मेंटेन करछि, what kind of actions you will take. Write examples of bureaucrats, write examples of business leaders, write examples of athletes. Okay, किछि भी एग्जांपल लिखि पारिबो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, नो नीड कि ओनली आईएएस अफसर मानकर एग्जांपल दिया हो. नो, पॉलिटिशियन, बट डोंट राइट कंट्रोवर्शियल थिंग्स. ओके, कंट्रोवर्शियल थिंग्स को टिके अवॉइड करियो. ओके,
then तार implication कौन, okay, then difference कौन, ये बोधे answer लिखा है नहीं, you write a गोटे table करी की लिखो probability आउ integrity, okay, तार कौन difference अच्छी, probability रे माने what is the small difference between probability and integrity, है ना, गोटे small difference लिखो, then तार implication हमारा public service रे कौन, okay, governance रे कौन, right, एटा भी direct question. इंटरप्रिटेशन रे जोठी भी प्रॉब्लम होनी देन देयर इज नो इश्यू गोटे स्टेटमेंट थाए जोटे कि इंटरप्रिटेशन इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लम ओके ताकू टिके कॉन्शियसली पढिबो आउ समस्त को रिक्वेस्ट की ऑल द डायमेंशंस ट्राई टू एड्रेस ओके क्वेश्चन को टिके भल से पढो किछिटा पिलांगर खाता मु देखिछि क्वेश्चन पचारछि गोटे से लिखि दिछन आ गोटे ओके इन एथिक्स it is highly possible ki there may be interpretation problem okay so read the statements properly while reading the question you always try to underline जेतले भी क्वेश्चन पढुछो अंडरलाइन करले तमे जानिबो जे कोनटा एक्चुअली मोर इंट्रोडक्शन कोन लिखियार अछि केतेटा डायमेंशन रे आंसर लिखियार अछि ओके नेक्स्ट लॉ एंड एथिक्स आर कंसीडर्ड टू बी द टू टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट so as to make it conducive to civilized social existence okay discuss how they achieve this objective with examples simple what is law what is ethics in definition you write what is law and what is ethics then what is the difference between law and ethics okay write here the difference between law and ethics गोटे टेबुलर फॉर्म रे लेखो लॉ और एथिक्स भितर कोन कोन डिफरेंस एडा लीगली इनफोर्सिबल एडा लीगली इनफोर्सिबल नुह एडा अवेयरनेस क्रिएशन द्वारा हुए एडा हमें माने कोन एनफोर्स करी करंती दिस इज वर्ल्ड वाइड मोर और लेस सिमिलर दिस इज स्पेसिफिक टू रीजंस ओके एमती करी की तार डिफरेंस लेखो देन हाउ बोथ आर हेल्पिंग इन ह्यूमन कंडक्ट हमको एथिकली बिहेव करिया रे कंडक्ट करिया रे हाउ बोथ आर इक्वली हेल्पफुल ओके and nothing law is nothing but a part of ethics only right law हमें जो derive करंती जो बनांती ethics को आगे रखी ही बनांती okay तो ये दीडे जाको केमती हमको हेल्प करंती पांच छटा पॉइंट विथ एग्जांपल ओके माने एनवायरनमेंट नेला पॉलिटी रे नेला साइंस रे नेला ओके इनती पांच छटा सेक्टर ने की लीगल नेला ओके ने की माने गोटे एग्जांपल दबो कि एनवायरनमेंट रो लॉ कोन करूची एथिक्स कोन करूची गोटे लीगल सेटअप नेला से लॉ कोन करूची एथिक्स कोन करूची ओके इंटरनेशनल रिलेशन नेला लॉ कोन करूची एथिक्स कोन करूची ओके तो पांच छटा सातटा सब हेडिंग दियो प्रति हेडिंग रे लॉ एथिक्स कोन लॉ गोटे एग्जांपल लियो तातले एथिक्स गोटे एग्जांपल लियो ओके इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी लॉ कोन अछि एथिक्स कोन अछि इन टर्म्स ऑफ social harmony law कोन अछि एथिक्स कोन अछि ओके एंड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्राई टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कौन प्रोविजन्स ओके कोड कोडी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जांपल दियो माने कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि प्रोविजन फंडामेंटल राइट हे गला ओके डीपीएसपी हे गला हैला फंडामेंटल ड्यूटी हे गला प्रिएम्बल हे गला एरा एग्जांपल भी तुम दे परियो ओके व्हेन यू आर राइटिंग लॉ और व्हेन यू आर राइटिंग एथिकल प्रैक्टिसेस आल्सो डीपीएसपी रे प्रिएम्बल रे बहुत सारा एथिकल टर्म लिखाइ छै ए करिया दरकार एमति रहया दरकार ओके तो ताकू भी तुम एठी ऐड करो you bring constitution ए टाइप रो क्वेश्चन रे ट्राई करिवो constitution को बहुत जगह तुम यूज करि परिवो इन ईच एंड एवरी पेपर ओके तो ट्राई टू ऑलवेज रिमेंबर कि constitution रे जिंस विषय कोन लिखाइ छै ओके तो इट इज कोच विथ एग्जांपल तुम लिखिलो देन कंक्लूड करलो कि बोथ आर इक्वली इंपोर्टेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ ए सिविलाइज्ड सोसाइटी और जाबी गोटे स्मॉल कंक्लूजन देके कंक्लूड करलो ठीक अछि एडा भी इजी ओके 15 मार्क रो क्वेश्चन तो दीटा डेफिनेशन तांका भितर डिफरेंस कोन गोटे स्मॉल तीन तीनटा लाखे पॉइंट देन पांच छटा पॉइंट हाउ दे आर हेल्पिंग फॉर ए आई मीन टू ए ह्यूमन बीइंग टू कंडक्ट हिज और हरसेल्फ इन ए बेटर वे ओके इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी विथ एग्जांपल्स ओके नेक्स्ट द बिगेस्ट एथिकल चैलेंज ऑफ 21st century is not corruption but moral apathy. Do you agree? Justify your answer with examples. If you are agree, then yes. Then if you are not agree, then no, and you prioritize to corruption. But in this type of question, jodi statement eta kohuchi, then you must agree. It's better to agree okay, instead of disagree. So it kon lekha habo what is moral apathy? In definition, you write what is moral apathy.
moral empathy माने कोन जदि तुमको जणा भी नहीं, you just write if you do not have moral empathy then it is moral apathy. Apathy means indifference. Okay, so what is moral apathy and how it is more dangerous than corruption? Okay, but that doesn't mean corruption is good. You write how moral apathy is more dangerous than corruption, तीन चारटा point. Okay, जो आम indifferent attitude लोक देखौचंदी, gender based discrimination करूचंदी, okay, resources को माने कोन properly तार misutilisation करूचंदी, okay, there are so many things we are doing, environment को damage करूचंदी, these are all moral apathy. Okay, towards marginalized people we are not empathetic. Okay, huge corruption itself is a part of moral apathy. If you are not morally empathetic, then also you will do corruption. Okay, so corruption is not separate. So तीन चारटा लिखिल, you bring corruption also into moral apathy कि if you are not morally empathetic or if you are morally apathetic, then you will do corruption also. Okay, पांचटा point लिखिल with example. Okay, for प्रतिरो example दबो. Okay, कोटी एनवायरनमेंट रो आमे किंती डैमेज करूचंदी, रिसोर्स एलोकेशन दे कोन प्रॉब्लम करूचंदी. ओके, मार्जिनलाइजेशन को एटीट्यूड रे हमर कोन प्रॉब्लम अछि, तो चारि पांचटा पॉइंट लिखलो विथ एग्जांपल, देन गिव सम सॉल्यूशन आल्सो. ओके, वंस यू आर डन विथ योर प्रॉब्लम, राइट सम सॉल्यूशन कि एथिकली कोन कोन सॉल्यूशन तार हे परिबो. हैला प्रॉब्लम लिखिला, देखो एट सब गोटे एग्जांपल एट लिखा भी अछि, इरोजन ऑफ सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी लॉस सब गोटे एग्जांपल भी लिखा अछि. आई एम नॉट गोइंग टू दैट बिकॉज़ सब जिंस लिखा अछि. देन गो फॉर वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन. ओके, एवला क्वेश्चन रे बिल्कुल सॉल्यूशन न लिखि छाड़िबोनी. ओके, स्ट्रेंथनिंग मोरल एजुकेशन किछिटा सॉल्यूशन भी एमतिया रफ एंड टफ मन रख, 10-15टा सॉल्यूशन एमतिया मन रख जोडा को भी तमे को भी क्वेश्चन रे चिपके परिबो. ओके, देखो एटा गोटे सॉल्यूशन जोड़ा को तुम बहुत क्वेश्चन लिखि पारिबो. जोठी भी प्रॉब्लम अछि, स्ट्रेंथनिंग मोरल एजुकेशन. Obviously, when we are educating our children with moral and ethical education, it will help in everything. To address social problem, to be a better human being, to be a good civil servant. सबुति पाई moral education is required, right? तो एमतिया नहीं जे particularly ए जिंस रे एटा दरकार, it is required in each and every field. तो एभला केतरा जनरल सॉल्यूशन मन रख जाकु तुम सब जगह लिखि पारिबो. ओके, मोरल एजुकेशन को हमको स्ट्रेंथन करियार अछि, सिविक एंगेजमेंट को एक्टिव करियार अछि, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को हमको कोन मोर स्ट्रिक्ट सहित इंप्लीमेंट करियार अछि, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करियार अछि. ओके, एंड सोशल एम्पैथी टू आई मीन थ्रू ट्रेनिंग और थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हमको डेवलप करियार अछि करिकि तार कंक्लूजन लिखिल. ओके, एडा किछि कष्ट क्वेश्चन नहीं. Okay, you should know what is moral apathy, then write how it is more dangerous than corruption, then bring corruption into moral apathy, then give some solution. Okay, next is moral courage. Okay, moral courage is the highest form of accountability. Discuss ethical dilemmas faced by civil servant in challenging administrative environment. माने ए वाला क्वेश्चन देखो, don't think कि these two statements are different. She coach कि when you are in ethical dilemma situation, how moral courage will help you. Okay, so start with either ethical dilemma as introduction or what is moral courage. Okay, start with anything as introduction, either moral courage kon lekho or ethical dilemma kon lekho, no problem. Okay, then how moral courage is the highest form of accountability. You write what is accountability, then link the link karo how moral courage is the highest form of accountability. If you are not courageous morally, then you cannot take accountability. Jodi tame morally strong na ho, then definitely you will not be accountable person. Okay, so what is accountability and how moral courage will give you the strength or give you the what man तुमको से जिनसटा दबो कि तुम accountable हुओ होउछ, ताकु लेखो 2-3टा पॉइंट कि 4टा पॉइंट with some example. Then what is ethical dilemma, जदि तुम इंट्रोडक्शन रे लिखि न, then लेखो what is ethical dilemma. जदि लिखि देइछो, then directly write कि how moral courage will support when you are in a ethical dilemma kind of situation. Okay, to a civil servant. 3-4टा सिचुएशन नियो एट देइथिबो. देखो क्वेश्चन नंबर 6 हला,
it moral courage upre definition lekhaichi. You can write definition of ethical dilemma also. Okay, then ethical dilemma faced by civil servants, either you can write like this also, or you write directly how moral courage will address these ethical dilemmas. Okay, एठी लेखिला आडू ही ए जिनसोडा मान लेखिबो. For example, लेखिलो political pressure from political masters. Okay, लेखिलो तार तळे लेखिलो कि this is a kind of moral dilemma situation. जेतला political master रो pressure हबो तम ऊपर तुम जानि परिबोनी मु action करिवि कि नै. Okay, तो सेठी तुमको moral courage केमिति हेल्प करिवो. When you are allocating resources, you may have ethical dilemma. Okay, sometimes we have, because rule गोटे हमको होथबो आमे जानुथबा जे need अलगा अछि. Okay, तो सेतला हमको moral courage केमिति हेल्प करिवो. Okay, तापर लिखिलो then conclusion. Okay, तो एट कोन कोन कराला. First you write what is ethical dilemma or moral courage is in introduction, then write how moral courage ensures accountability. Okay, then write what is ethical dilemma and how moral courage will help you in ethical dilemma situations. Hela. Then the relevance of, next question, discuss the relevance of Confucian ethics in promoting social harmony, administrative efficiency in modern governance system. So first you have to write what is Confucian ethics. Okay, Confucian ethics कोन लिखिला हला. It emphasizes virtue, बाकी यार अछि integrity and benevolent governance. हला यार 500 टा टर्म अछि Confucian ethics रो. आकु टिके मन रखथा. Okay, in exam जदि पढला आकु जिंबी टिके लिखि पारिबो हला ए टर्म मोडा. Then तार कोन अछि role in promotion of social harmony in administrative efficiency. Okay, Confucian ethics केमिति हेल्प करे social harmony promote करे रे, administrative efficiency promote करे रे. 5 पॉइंट लिखो डायरेक्ट हला. एडे सेपरेटली लिखाइ छि बोते. promoting social harmony लिखाइ छि, promoting administrative efficiency लिखाइ छि. आइदर तुम मिसे की भी लिखो या तो सेपरेट करके 3-4 पॉइंट लिखो हला. Then a question de challenges, if you can write okay, if you do not write also okay, no problem. Okay, then ताकू हमें modern governance रे केमिति यूज करि परिबा 2-3 पॉइंट. Okay, ए भला क्वेश्चन एठी हम तुमको कोन कि बहुत पॉइंट दे दोछु एक्स्ट्रा, सो दैट अदर क्वेश्चन जदि आर रिलेटेड आसले भी तुम केमिति एड्रेस करि परिबो. बट अदरवाइज ए क्वेश्चन कोन, हाउ इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लिखियो 3-4 पॉइंट हला. देन ताकू मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम रे केमिति हम एडॉप्ट करि परिबा 2-3 पॉइंट लिखिलो हला. लिखि कि कंक्लूड करो. राइट, then conscience is necessary but insufficient guide for ethical conduct in public service. Okay, एक क्वेश्चन दे कोन करछो बहुत पिला, it is necessary but not sufficient लिखि दिछो, but with what it will be sufficient, आ सहित कोन हेले sufficient हबो सेडा लिखिनो. Okay, first लिखिबो एटी कोन लिखाबो definition what is conscience हला. Then it is necessary but not sufficient because of what, why it is not sufficient, I mean necessary but not sufficient. Okay, first लिखिलो what is conscience definition. Okay, role of conscience in public service लिखाइ छि, एडा भी लिखि परिबो 2-3 पॉइंट. Okay, then why it is not sufficient, ए लिखाइ छि challenges on conscience. That means what, it is not sufficient. Challenges means what, it is not sufficient, it is necessary but not sufficient. Okay, तो कोन करले sufficient हबो एटी जा लिखाइ छि ए वेर लिखो, नहले मु गुडा पिला खातार भी लिखि छि. With conscience you need prudence, with conscience you need pragmatism, with conscience you need competence, with conscience you need compassion. एमति करी गोटे पॉइंट लिखिबो. Okay, how it will be sufficient, with conscience what else we need. Okay, conscience with prudence, conscience with pragmatism, conscience with competence. Okay, conscience with what, courage, compassion. Okay, एवडा नेले एवडा रहिले, now then you will act ethically. Okay, then से कहूँ कि there are some institutional framework अच्छी. Okay, जे कि complement करूँ conscience को to work in ethical way. Okay, जोड़ा कि हमर code of conduct अच्छी, training दिया होची. Okay, then accountability fix करे पे mechanism अच्छी. तो conscience सहित ए सब गवर्नमेंट रो गाइडलाइंस अच्छी या तो गवर्नमेंट रो institutional framework अच्छी जे कि तुमको ethically गाइड करूची. Okay.
in a public domain. Next, moral development is as crucial as professional development. Okay, discuss the statement with respect to the corporate governance. Okay, so it definition should be what is moral development, or what is best is what is corporate governance. Start with what is corporate governance. Okay, then write importance of moral development, importance of professional development. दीड जगह लिख लो, एथरे 3-4 पॉइंट, एथरे 3-4 पॉइंट. Then both we need, actually we need both moral development as well as professional development. Okay, तो गोटे लिख लो कि what is corporate governance. Okay, then importance of moral governance in corporate governance, moral development in corporate governance करी गोटे हेडिंग देला, तातले 3-4 पॉइंट लिख लो, तापर लिखिबो but professional development is also important in corporate governance करी 3-4 पॉइंट लिख लो. Then combination of both is always the best solution. Okay, it's always the way forward. कोई कि 3-4 पॉइंट आइदर way forward करके लिखो या तो conclude करके 3-4 पॉइंट करके conclude करो. Okay, माने एडी कोन एडी कोनी जे moral development is more or professional development is माने एटा अधिका कि सेटा अधिका दरकार, ये कोची दीड जको इक्वली दरकार. तो importance of moral development in corporate governance, importance of professional development in corporate governance. Okay, 3-4 पॉइंट लिखी कि way forward करके 2-3 पॉइंट लिखो कि combination of both will be good. Okay, करके conclude करा. अब एडी लिखला बेले सब बेले एग्जांपल दबो. Professional development लिखला बेले you can write, there are so many examples. Moral development लिखला बेले there are so many examples. Okay, 3-4 पॉइंट पे तो example enough अछि. Okay. Corporate governance doesn't mean only company. Corporate governance means legal firm. Corporate governance means highest bureaucratic setup. Okay. तमे नीति आयोग एग्जांपल दे परिबो, तमे जे कोनोसी कंपनी एग्जांपल दे परिबो, तमे इंडस्ट्रियलिस्ट एग्जांपल दे परिबो. ओके, एनी पब्लिक सर्वेंट इन हाई पोजीशन भी एग्जांपल दे परिबो. फॉर एग्जांपल तमे बे जो हमर मेट्रो मैन अछि, इन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कोन दाना. ओके, तांगा नाम दे परिबो. दैट इज अ काइंड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर ओनली. ओके, देन तमे ए भलिया प्रति पॉइंट पे गोटे एग्जांपल सब में दबो. ओके, then today's last question. Today we find that in spite of various measures of prescribing code of conduct, setting up vigilance cells, RTA, etc., corruption practices are not coming under control. So evaluate the effectiveness of these measures with justification and suggest more strategy. एइथरे कोन भूल करछ समस्ते, तमे कोन करछ ना ए सब जो एक्शन निया हिची माने एक्शन निया नै कि कोन होउची सेटा लिखि दिछो. क्वेश्चन पचारुची इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेजर्स. जेहेतु इफेक्टिव नाही से कहूची जे मोर इफेक्टिव मेजर सजेस्ट करो. तो तमे तळे लिखिबो कि आरटीआई कोन करूची लिखिलो गुड दिरा पॉइंट. तमे जते लिखुचो हमर अछि कोन लिखाइ छेडी विजिलेंस सेल. ओके, तो कोन करूची तार काम कोन लिखिलो. ता तळे गोटे पैराग्राफ करि लिखिबो कि इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेजर्स. Why these measures are not effective actually. So I wrote statement लिखिबो कि these measures are not as effective as it was माने डिसाइड जेतला करा हितला जोटा हमर गोल थिला सेति कि इफेक्टिव हेनी. The reasons are कहि कि लिखिबो why they are not effective. Okay, there is implementation problem, there is a awareness problem. Okay, there are lack of manpower in implementation of this particular schemes or programs. Okay, 3-4 पॉइंट लिखिबो कि कोन हमर शॉर्टकमिंग्स अछि जेथि में कि एमाने एते इफेक्टिव हे नांती. देन सेकंड पार्ट लिखिबो कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी. जहा प्रॉब्लम से स्ट्रेटजी मैन पावर दरकार, अवेयरनेस दरकार, एक्सपर्टीज दरकार, मोर R&D दरकार. ओके, एंड व्हाट हमर लिटरेसी दरकार अधिका लोकंग रहितरे कहि कि स्ट्रेटजी लिखिबो. 5टा पॉइंट स्ट्रेटजी. ओके, and जेतला फेलियर लिखुचो, जेतला ineffective लिखुचो, there you give some examples. Okay, there are so many examples where it shows कि ए जिंसा का हमर इफेक्टिव है नहीं. RTA रे there are so many RTA activists are murdered. Okay, बहुत सारा RTA activist को मारी दउचंदी. बहुत सारा RTA केस रे प्रॉपर इंफॉर्मेशन बहुत डिले होची मिलुनी. विजिलेंस सेल रे तमे देखिबो कि there are so many corrupted people scot free के बुलुचंदी. तांको ऊपर एक्शन किछि होउनी. Okay, code of conduct बहुत जगह लोग वायलेट करछंदी, no action is has been taken. Okay, तो ए सब जिंस लिखिबो when you are writing
why it is ineffective ହେଲା ତା ତଳେ ସେ एग्जांपल ଦେଇକି ଲେଖିବ then you write some strategy कि कौन कौन steps निया राइट आंसर दिया ହେଇଛି तुम बाहर जति अच्छी पढ़िबो अदरवाइज यू कैन गो थ्रू दिस मॉडल सर से जो इनइफेक्टिव क्वेश्चन थिला सेतिर हमें डाटा दे परिबो कि एतिकी केस पेंडेंसी अछि एतिकी जेंति डाटा दे परिबो सेटा ही तो कहउची ना कि इट इज इनइफेक्टिव मींस व्हाट कि जुडिशियली रे एति केस पेंडेंसी अछि ओके एतिकी कन्विक्शन रेट हमर एते कम ई सब डाटा दे परिबो ओके सो दिस इज ऑल जदि तमरो कार किछि डाउट अछि यू कैन आस्क सर गोटे डाउट थिला माने रिगार्डिंग टेस्ट नो सर एथिक्स रे गोटे क्वेश्चन सर जदि हमको चूज करिया पय गोटे क्वेश्चन आसे एग्जाम रे कि इमोशनल इंटेलिजेंस और रैशनैलिटी भीतर किछि गोटे चूज करिया पय तो हमर आंसर सर कोन हबो तो वेयर हम लिखि परबा कि इमोशनल इंटेलिजेंस और रैशनैलिटी when they will ask you to choose between two good things you choose both okay सबुबेले हमको मिडिल पाथ नेकी चलियार अछि जदि तुमको गोटे भलो खराब भीतर चूज करिया को अछि यू चूज द बेटर वन बट व्हेन यू आर asked to choose between two good things in administration there is nothing called black and white एटा रखिबा एटा छाडियो सेमि किछि भी पब्लिक सर्विस रे नाही राइट तुमको किछि सिचुएशन रे रेशनल हवार अछि किछि सिचुएशन रे इमोशनल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट रेशनैलिटी आल्सो ओके इमोशनल इंटेलिजेंट जो कंपोनेंट अछि सेतिर तुम रेशनैलिटी भी अप्लाई करू सेल्फ अवेयर मींस व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस रो गोटे क्वेश्चन होची सेल्फ अवेयरनेस मींस व्हाट यू आर रेशनली एनालाइजिंग योरसेल्फ राइट कि एटा मोर वीकनेस एटा मोर स्ट्रेंथ मु एथिरे भलो करि परिबी एथिरे मोर एतिकी स्किल नाही दैट मींस व्हाट रेशनली यू आर एनालाइजिंग योरसेल्फ राइट बट किसी भी क्वेश्चन तुमको एमदिया पड़ुची माने एटा तो इजी हे गला कि रेशनैलिटी इज ए पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बट अदरवाइज सर गोटे एग्जांपल सर जेंति गोटे धरा जो डीबीटी माने जो हमर पीडीएफ सिस्टम रे डिस्ट्रीब्यूशन समय धरा जो जन को पाखरे आधार कार्ड सेति वैलिड डॉक्यूमेंट नाही बट एज इमोशनल इंटेलिजेंस अनुसार जेहेतु से पोर डेस्टिट्यूट तो हमें तांको प्रोवाइड करबा दरकार बट रेशनैलिटी अनुसार हम जदि चेक करबा जेहेतु तांको पाखरे वैलिड डॉक्यूमेंट नाही तो हमें से समय सर को थिंग्स को अडॉप्ट करबा दरकार हां देखो सेठी सॉल्यूशन कोन एटा एई टाइप रो क्वेश्चन आसीबो तुमको केस स्टडी रे एटा केबे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एभळे आसीबोनी एटा होची केस स्टडी एइथिरे कोन करिवो जेंतले आंसर लिखिवो जे तमे कहउछो कि लोकोडार आधार कार्ड नाही बट लोकोडा एक्चुअली एलिजिबल माने नहीं एक्चुअली सी पाइबा कथा बट ता पाखरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट नाही सो व्हाट यू डू इज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर you have the see laws are not made to implement inhumanly laws are always for welfare जो स्कीम हम करिसोंती कोन लोकम पई ही तो करिसोंती वेलफेयर पई करिसोंती एतिकी तो लिबर्टी हम पाखरे भी अछि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर you give that people or the person the जतिकी बेनिफिट से पाया कथा से माने ताको से बेनिफिट ता देकी ताको इंक्लूड करो तार तो कोन जदी गोटे लोकोडे एलिजिबल अछि बट ता पाखरे डॉक्यूमेंट नाही राइट तो तमे कोन करि परिबो से सिचुएशन रे से लोकड़ा कोन पे ता पाखरे डॉक्यूमेंट नाही बिकॉज़ ऑफ आमर नेग्लिजेंस पे ता पाखरे डॉक्यूमेंट नाही राइट तो तमे ताको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो आ एलिजिबल करे दियो करे कि ताको नेक्स्ट टाइम राशन दियो बुझी परछो या तो तमे माने कोन तमरो जो अछंदी सबऑर्डिनेट ताको इंस्ट्रक्ट करो जे जेतिकी से पाइबा कथा ताको ए मास रे प्रोवाइड करो ताको डाकी आनी की हमरो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करा राइट this should be the solution when you are writing solution for this kind of problem don't write ki I will follow strictly rule आ ताको को छाड़ देबी मु सेमती भी नाही कि ताको मु जेतु मो पाखरे से जो कोन लिबर्टी अछि आ डिस्क्रिशनरी पावर अछि मु ताको दे देबी दैट इज आल्सो भूल दैट सेटा भी भूल डिसीजन तमे एठी कंबाइन कलो बोथ को ताको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करे कि एलिजिबल करेला सो दैट ही इज नाउ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ही इज एलिजिबल and he will get what he deserves right this should be the solution but because तुम practically भी भाबी के देखो आज जदी तुम गोड लोक फ्री रे दे देलो काली सकाळे तुम सेठ थिबो बोली मान नाही नेक्स्ट जे आसीबो कोन होसे लोकडा पुनी सफर करला ता भारे डॉक्यूमेंट नाही सो ताकू तमे आनी की डॉक्यूमेंटेशन करे होची तमरो दायित्व केमिति करबो दैट you must know okay you instruct your subordinates or your colleagues
कि ताकू डॉक्यूमेंटेशन करा हो प्रॉपर्ली एंड ताकू जहाँ तार कौन सी जी पाइबार एलिजिबल ताकू से जिनस दि जाओ बोथ यू हैव टू डू साइमल्टेनियसली ओके एंड देर आर सो मेनी अदर क्राइटेरियास ऑल्सो सी जदि गोटे लोक को ये जिनस मसरे बेनिफिट नाही बट सी एलिजिबल थिला डॉक्यूमेंटेशन करने टाइम लगे आम सेमती इलीगली दे पारियानी देर आर सो मेनी वेज यू कैन प्रोवाइड फंड्स फ्रॉम रेड क्रॉस ओके ताको ए मासटा रेड क्रॉस रु फंड प्रोवाइड कर दियो से पैसा किणु नेक्स्ट मास तुम ताको डॉक्यूमेंटेशन करके रेडी कर दियो सो से टाइप रो डिसीजन तुम सब बेले नहीं लिखियो यू मस्ट बैलेंस बोथ ओके स्ट्रिक्टली यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट रूल वेयर it is violating the human rights or in other way also you cannot just to promote human rights you cannot violate rules all the times okay तो ये बड़ा बैलेंस करके तुमको लिखियार अछि बुझि पारला yes sir आउ जार डाउट अछि पचारो जार डाउट नहीं यू कैन लीव because exams are nearby तो पढ़ा पढ़ी करियो ठीक से जदि कार डाउट नहीं विल क्लोज हां सर मोरो कितना पीवाईक्यू रे डाउट थिला पीवाईक्यू माने मेंस वाला हाँ ठीक अछि को सर मेरे कमेंट सेक्शन रे करूची पोस्ट हां जार नाही किछि डाउट यू कैन लीव ओके ये भलिया क्वेश्चन ने कोनथि स्ट्रक्चर करियो ठीक कहि देबे आ केमथि इंट्रोडक्शन लिखा हो ठीक ठीक तमे गोटे दिटा क्वेश्चन एठी पचारो जदि तुमको माने बहुत क्वेश्चन डाउट अछि यू कैन राइट इन योर जो तुम खाता पठो न सेठी तुम लिखि के देले मु तार किछिटा सॉल्यूशन कहि देबी बट जदि किछि शॉर्ट रे अछि यू कैन आस्क नो प्रॉब्लम sometimes due to empathy a humanistic attitude and dedication to public service an administrator is likely to think to bend the rules and become lenient acha eta to last year question na यस सर however to be humanistic adopting empathy and dedication to public interest are moral but bending the rules and bending the illegal explains dilemma arising here ha एडा ही तो से बे पचारथले जो लिप्सा बे क्वेश्चन पचारले एडा ही पचारथले श्योर फास्ट जो पैराग्राफ टा माने जो देछि स्टेटमेंट टा सेटा जोटे स्टेटमेंट समटाइम्स ड्यू टू एम्पैथी एंड ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एन एडमिनिस्ट्रेटर इज लाइकली टू थिंक टू बेंड द रूल्स एंड become lenient a little okay which could legally help the person okay however to be humanistic adopting empathy and dedication to public interest are moral but bending the rule is illegal okay so explain the dilemma here what you write eta hochi gote ethical dilemma ra question okay start with the definition of ethical dilemma eti se dekho eti silent ଅଛି ethical dilemma word ta se dilemma likhichi last re start with ethical dilemma okay what is ethical dilemma you write first second following the se kon kochi humanistic attitude okay when we follow benefit of following humanistic attitude okay in public service koi ki 3-4 point ta tole likhibo okay but second paragraph un likhibo second jo heading with humanistic attitude we must also follow the rules and regulations okay why following rules and regulation is important while following humanistic attitude koi ki 3-4 point likhibo okay माने से कोन कोची क्वेश्चन कोची जे ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड डेडिकेशन एम्पैथी देखे कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इट इज गुड बट इन सो मेनी टाइम्स वी हैव टू बेंड द रूल्स व्हिच इज इलीगल ओके तो तमे गोटे पैराग्राफ होची कि वी मस्ट फॉलो ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड ओके व्हेन वी आर इन पब्लिक सर्विस कहि कि 3-4 पॉइंट लिखिबो तार बेनिफिट कोन ओके सेतिर कोन बेनिफिट तमे पब्लिक वेलफेयर प्रॉपर्ली करि परिबो लोकंगर ट्रस्ट प्रॉपर्ली जिति परिबो जीए तो एक्चुअली डिजर्व ताकू तुम बेनिफिट पहुंचे पारिबो रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर्ली हे पारिबो 3-4 की 5टा पॉइंट तातळे आसिला नेक्स्ट while following humanistic attitude we must adhere to the rules and regulations also करी कि तातळे लिखिबो 2-3टा सिचुएशन दबो ओके कि माने while following this we have to follow the rule also because okay that will impact in a better way for the larger society in the future okay जदि हमें रूल को फॉलो कलेनी केवल एटीट्यूड फॉलो कले
we may do some mistakes, okay, like we may be sometime bias, गोटे लोकर problem नथिबो but सी आसिक हमको unnecessary फायदा उठेबो because आमे जदि जने जानला जे आमे बहुत ही कौन कूल काम पर्सन आमे रूल देखु ना लोकंकर दया देखिकी दुख देखिकी आमे दया कर दोछंदी लोक आसिक हमको फायदा भी उठेबे, राइट? सो सेकंड हेडिंग विल बी proper what investigation of the case, माने आमे जेतेले ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड फॉलो करूचंदी रूल भी हमको फॉलो करियर अछि, ओके? जदि न कले कोन प्रॉब्लम हबो, वी मे बी बायस्ड, रिसोर्स मे बी वेस्टेड, ओके, और पीपल मे टेक द बेनिफिट इन इलीगल वे, हला कोइ कि तीन चारटा पॉइंट लिखिबो कि ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड सहित रूल भी प्रॉपर्ली माने रूल को भी आमे देखियार अछि सो दैट आमर जो एक्शन टा हबो सेटा जेमति लार्जर गुड पय हबो, बुझल? एते जो पैराग्राफ देछि एथिरे सिंपल लिखाइ छि कि एटा गोटे एथिकल डायलेमा सिचुएशन, व्हाट यू विल डू, देयर आर टू कंडीशंस, गोटे होछि रूल फॉलो करियर अछि, गोटे होछि तुमको प्रॉपर ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड देखायर अछि, ओके? बोथ इज रिक्वायर्ड, राइट? तो इंट्रोडक्शन विल बी एथिकल डायलेमा, फर्स्ट हेडिंग विल बी we must follow humanistic attitude, second heading will be we while following humanistic attitude we must also what adhere to the rules and regulations, हला कोई कि आप आतल तीन चारटा पॉइंट आतल तीन चारटा पॉइंट बुझिलो? यस सर आउ जो रूल्स बेंड करियार लिखि छि तारो फेवर रे किछि भी पॉइंट्स लिखिया नाही ता फेवर रे भी लिखि परिबो दि तीनटा पॉइंट, बट जेंदी मु तुमको कहली ना रूल बेंड मींस व्हाट, रूल बेंड तमे करी कि जण को हेल्प करूछ, बट इन द नेक्स्ट स्टेप यू ब्रिंग दैट पर्सन इनटू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एबे जेंदी मु तुमको कहली ना सी जो पचारुतले कि जणे एलिजिबल अछि पीडीएस पाइबार बट ता नाटा नाही, सो व्हाट यू दैट इज आल्सो बेंडिंग द रूल, व्हेन यू आर giving benefit you are bending the rule but you are bringing that person to the legal framework, okay? Now some cases, in some cases you can bend the rule, माने कोन तमे रूल बाहर को जाय कि काम करि परिबो, but when your action is in good faith you can defend that, no problem। तमे लिखि परिबो दि तीन एग्जांपल कि माने रूल बेंड करि कि भी तमे जन को हेल्प करि परिबो। फॉर एग्जांपल तुमको गोटे माने कोन तम बॉस रो या तो तमर माने गोटे लोकर मीटिंग अछि या तो गोटे मिनिस्टर को भेटियार अछि, रूल कोन कहूची जे तुमको प्रॉपर टाइम रे ऑफिस आसियार अछि, प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन फॉलो करियार अछि, बट से टाइम रे तमे ऑफिस गलाळे किछ गोटे डिजास्टर देखुछो जोडी कि तुमको हेल्प करियार अछि गोटे लोक को, सेडी कोन हला तमे ऑफिस रो रूल भांगिलो या तो मीटिंग अटेंड न करी कि रूल भांगिलो, है ना? But in humanistic ground you help that person, right? तो एमती गोटे दिटा एग्जांपल देखि तमे लिखि परिबो, ओके? ताकू जस्टिफाई एनीथिंग you can just if you justify properly it is right, there is no hard and fast rule कि एमती लिखियार अछि एमती लिखियार नै, बट यस ए वाला क्वेश्चन को कोन कि बुझी कि लिखिया होछि कष्ट जे फास्ट मु केतरा डायमेंशन रे तार आंसर लिखिबी, ये जो एडा बड़ स्टेटमेंट दिया छि फास्ट जने बुझी कि भाई परिबम जे मु स्टार्ट केमति करिवि, ओके? आ केतरा डायमेंशन रे तार आंसर लिखिबी तमे एडा भी जस्टिफाई करि परिबो, गोटे दिटा सिचुएशन नबो जोडे कि रूल वायलेट करी कि तमे किछि गोटे ग्रेटर गुड पे गोटे काम करूछो एंड दैट इज जस्टिफाइड, ओके? लिखि परिबो नो प्रॉब्लम, बट बैलेंस करी कि लिखले ऑलवेज बेटर, बुझियला? यस सर आउ सर आउ गोटे से लास्ट ईयर आउ गोटे क्वेश्चन दे थिला मो आपन को टेलीग्राम रे पठेले फोटोटा देखि तो परिबा, पढ़ी दो ना, खाली पढ़ी दियो, पढ़ी दिले भी हो। ओके? Kant has given three formulations of the categorical imperative as the following: act so that the maxim of your action should जस्ट become गोटे a गोटे मिनट रो universal law. मु भी क्वेश्चन दा बाहर करूछि नले Question number 5 ta. गोटे सेकंड पेपर 4 नहीं Yes sir. क्वेश्चन नंबर 5.
दिया है लास्ट ईयर रो हाँ सर दिया है। सेटा टिया आंसर कॉपी रे लिखला बेले केमती स्ट्रक्चर करी लिखी सेटा बुझा पड़ला नहीं। जो तीनटा स्टेटमेंट अछि सिथरे हाँ हाँ Kant is given three formulations of the categorical imperatives as following: act so that the maxim of your action should become a universal law. Okay. Act so that the maxim of your action. So माने देखो फास्ट लिखिबो कि गोटे शॉर्ट इंट्रोडक्शन की तमे जेहेतु एटा कांत रो स्टेटमेंट कि से स्टेटमेंट ता कोन डिफाइन करूची ओके व्हाट एक्चुअली कांत I mean तांकर इंटेंशन कोन व्हाट ही वांटेड टू से फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ओके एथिर सो कोन कहउचंदी कि something else is central idea in his ethical philosophy but the principle serves as a foundational concept in Kant's moral story which emphasizes duty, reason and universality. A maxim is a subjective principle of action. It is true. It is a rule or guideline that the individual follow when making decision. For example, if you decide to tell the truth, your maxim might be I will. अच्छा से कहा था कि स्टेटमेंट रो मीनिंग होची देखो तुम कोन करिवो एडा एडा केमदी लिखिवो माने एडा लोड 20 मार्क रो क्वेश्चन तीनटा पॉइंट एथिर अछि हला फॉर दैट मींस व्हाट गोटोटे ये को तुमको अराउंड 7 मार्क पड़ला राइट तो तुमको हार्डली 1.5 पेज रे गोटो लिखियार अछि 1.5 पेज ही तुमको थिबो जागा तो स्टार्ट विथ की ए स्टेटमेंट रो मीनिंग कोन अकॉर्डिंग टू कांत हला स्टार्ट करिवो कि अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर इमैनुअल कांत this statement states कि the maximum of our action whatever we think okay whatever we think if we hold the maximum of that particular idea or that particular concept it should be applicable to I mean what everywhere and जदि आमे भाबुछन जेंदी एडु एग्जांपल दिया अछि कि जदि तुम भाबुछ जे मु सत्य कहबी you should tell truth in each and every situation so that तमर जोड़ा मैक्सिमम माने जो सत्य कहयार तमर जो थिंकिंग या तो तमर जो एटीट्यूड दैट शुड बी इन सच ए थिंग दैट इट शुड बी द यूनिवर्सल लॉ मींस इट शुड बी यू शुड एप्लीकेबल इट टू एवरीवेयर एमती नाही जे आज गोटे जिंस जेतला मो सपोर्ट रे आसु मु ठीक सत्य कहबी जोटी मोर सपोर्ट रे आसुनी मु सेठी मिछ कहि देबी नो ओके तो दैट इज द एक्चुअली आइडिया हैला तो तमे ताकू नै कि देखो एटा एक्चुअली से कोन करछि जस्ट डिवाइड कर देछि किछटा पॉइंट तमे कोन करिवो देखो जदी एट तो गोटे स्टैंडर्ड आंसर मु लिखि देछि तमे आकू पढिले भी आइडिया आसीबो अदरवाइज आल्सो कोन करिवो इंस्टेंटली जदी हम स्टेटमेंट आसिला टेक 3-4टा कि 5टा भलो भलो डिसीजन फॉर एग्जांपल टेलिंग ट्रूथ फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी फॉर एग्जांपल honesty okay for example transparency एबला 3-4टा वर्ड मु सेति में कहूची एथिक्स पेपर रो ईच एंड एवरी वर्ड तुमको मन रे दरकार एबला 4-5टा वर्ड उठेबो ताकू जस्ट सिचुएशन वाइज फिक्स करिवो मींस when I am truthful I should be truthful in each and every decision कहि कि गोटे एग्जांपल दबो when I am taking a or when I am what reporting something to my boss even if there is some problem even if there is some mistake I must confess the truth then transparency when I am taking any action I must be transparent even if there are some mistakes accountable when there is a decision is taken okay whoever takes the risk as the head of the office I will take the accountability okay honest I will be honest in each and every situation okay integrity एमती करिकी 5-6टा पॉइंट लिखिबो ताकू निज ऊपर डिफाइन करिवो सेटा तुमको तुम निज ऊपर पचारुछि ना एक्ट सो दैट द मैक्सिमम ऑफ योर एक्शन शुड बिकम यूनिवर्सल लॉ ओके तो मु एई 5-6टा पॉइंट रे सबु बेले 100% स्टिक करिके रहबी राइट बुझ पारला यस सर सेटा सिविल सर्वेंट्स कॉन्टेक्स्ट रे लिखि छी माने लास्ट को लिखि छी क्वेश्चन दा हां एज ए सिविल सोसाइटी एक्सक्लूडेड
एज ए हाँ। सिविल सर्वेंट ही तो कहूछ ना कि आई विल बी ट्रूथफुल, आई विल बी ट्रांसपेरेंट। मु तो देखो लास्ट स्टेटमेंट हम पढ़िनी, बट तुम मतलब क्वेश्चन टा पढ़िबो सिविल सर्विस कंटेस्ट लिखियार अछि, तो यू राइट यू एज ए सिविल सर्वेंट से कोन कहूची यू राइट, राइटिंग टा एमिन तो रहबा दरकार कि यू आर राइटिंग एज ए सिविल सर्वेंट। ओके, आई विल बी ट्रांसपेरेंट, आई विल बी अकाउंटेबल, आई विल बी ट्रूथफुल, आई विल बी ऑनेस्ट, आई विल मेंटेन इंटीग्रिटी एज ए सिविल सर्वेंट। निज ऊपर नै कि लिखले कोन कि लेखाडा इजी हे जिवो तुम बुझि पारलो। Yes, sir. मेन होची तुमको स्टेटमेंट रो मीनिंग टा बुझियार अछि। व्हाट इज दिस मैक्सिमम ऑफ योर एक्शन? मैक्सिमम ऑफ योर एक्शन मींस व्हाट एवर यू आर डूइंग or whatever you are thinking, you must hold the highest position in that particular thought. हला एडा बुझिलो। सेकंड स्टेटमेंट होची एमतिया ताको एक्सप्लेन करिवो। देखो किछिडा जागा रे ना जोडी तुमको कंटेंट मिलुनी प्रॉपर्ली, यू राइट एज ए स्टोरी, यू राइट योर ओन एक्सपीरियंसेस तुम बाहर करके लिखो, नो प्रॉब्लम, किछि प्रॉब्लम नाही। आउ खास करी जोठी भी कोटेशन दोची एडा कोन कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। Quotation based question रे always try to write experience, okay, your own experience or experience from the society, story भले लेखो, नो माने किछि प्रॉब्लम नाही। जदि तमे ताको प्रॉपर्ली पॉइंट रे डिवाइड करि परछो वेल एंड गुड, जदि भी पॉइंट रे डिवाइड करि परनो चारि पांचटा स्मॉल स्मॉल स्टोरी टाइप रो लेखो, माने 2-3 लाइन लिखलो गोटे एग्जांपल देला। ओके, एटा देखो एट नेक्स्ट कोन कोची ट्रीट ह्यूमैनिटी इन एवरी केस एज एन एंड इन देमसेल्व्स नेवर एज एन मींस। ओके, माने सबु बेले जहाँ भी तमे एक्शन नौच सबु बेले सेटा को एंड मीन्स व्हाट, इट शुड बी गुड रिजल्ट। ओके, माने जदि तमे धर जन को हेल्प करूछ, जो कहंती ना कि डोंट गिव फिश, शो देम द पॉन्ड। ओके, माछ धरिया सिखाओ, नॉट कि ताको सब दिन तमे देकी नेकी माछ दउछ। ओके, whenever you are helping someone, help in such a way that next time he must take care of himself. Okay, जदि सब दिन तमे जन को खाइबा को दउछ, दैट मींस कोन तमे ताको एंड भले व्यवहार करलोनी ना, यू माने कोन तमे ताको गोटे बेगर करके रखि देलो सब दिन पाई। You help in such a way that that particular person will help himself or herself from the next time onwards. Okay, तो फास्ट रे जदि तुमको एवडा सब देखो, एवडा होची कोन कि टेक्निकल वर्ड, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ऑल लिखाइ छै, एटा तुमको एग्जाम रे मन पडियोनी। इन एग्जाम यू राइट कि यार मीनिंग टा जस्ट लिखो। अकॉर्डिंग टू कांत, we should treat every human being as a end and not as a means. That means when we are treating or when we are helping a human being, we should help him in such a way that he must take care of himself and he must not take the help from others from the next time onwards. In the कहि निज लैंग्वेज रो इंट्रोडक्शन लिखो, दि तीनटा पॉइंट करके लिखियो हला, एउडा तमरो मन पडियो कि न मन पडियो नो प्रॉब्लम। ओके, तमे ताकू निज लैंग्वेज रे लिखियो कि 3-4टा सिचुएशन नियो, गोटे ऑफिशियल सिचुएशन नियो, गोटे डिसीजन एथिकल डायलेमा वाला सिचुएशन नियो, गोटे कोन हमर कॉन्शियस वाला सिचुएशन नियो, एमते 3-4टा सिचुएशन नियो नेकी लिखियो जे व्हेन आई एम डूइंग दिस वर्क और व्हेन आई एम डूइंग दैट। धर तुम कोडे डिसीजन नेबा को वाला ऑफिस रे, ओके, यू टेक ए डिसीजन इन सच ए वे दैट कि it serves the greater purpose. Okay, it serves the माने कोन समस्तंकर जेमती सेठी इंटरेस्ट सर्व होतो प्रॉपर्ली। ओके, जो माने जेन्युइनली इंटरेस्टेड या तो जो माने जेन्युइनली तार स्टेक होल्डर। ओके, बुझि पारलो याको थोड़े आंसर। Yes, sir. बट इन एग्जाम यू मे नॉट गेट दिस एग्जैक्ट कोटेशन को केबे भी कोन कि कोटेशन रो आंसर टा सब बेले इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। कोटेशन टा केबे भी तमरा प्रॉपर घिसा पिटा आंसर आसीबोनी। कोटेशन सब बेले तमे एड्रेस करिवो थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस इन सोसाइटल सिचुएशंस। ओके, समाज रे जहा चलची तम लाइफ रो एक्सपीरियंसेस को नै कि जदि ब्यूरोक्रेसी रे पचारची, ब्यूरोक्रेसी रे कोन से रिलेटेड प्रॉब्लम चलची या तो ब्यूरोक्रेसी रे कोन से रिलेटेड सॉल्यूशन देखा होची, ताकू कोट करी कि जदि तुमको से टारगेट करी पचारची, यू एज ए ब्यूरोक्रेट यू राइट I will take this decision, I will do that, I will do this करके तुम लिखो। ओके, बुझि पारलो? Yes, sir.
ଏଟା ତ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏଟା ଆଉଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? सर आउ किछटा डाउट अछि यूपीएससी रा पीवाईक्यू रो मो जंती लेखिकी सेंड करिवे अपन ठीक चेक हाँ कर हाँ देबे। हाँ हाँ निश्चय निश्चय तमे लिखिकी सेंड सर करो, आपण को सेंड करिए ना शुभेंदु सर को। मते डायरेक्ट सेंड करो। ठीक अच्छे सर। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आउ पढ़ापढ़ी भलसे कर। आई विल टेक अनदर 2-3 दिन भीतर गोटे सेशन करवा गोटे मासर स्ट्रेटेजी में, ठीक अछि? सर आ केस स्टडीज टाइम पे गोटे केस सेशन स्टडी रे करवा नेक्स्ट जितलो फुल लेंथ टेस्ट हबो सेतिर मु केस स्टडी देबी हला। केस स्टडी देले तापर माने गोटे एक्चुअली क्वेश्चन सामने रहले ही प्रॉपर डिस्कशन हे परिबो, राइट? तो केस स्टडी देले तापर डिस्कशन करवा, ठीक अछि? ओके सर थैंक यू। ओके चलो समस्त को गुड नाइट, थैंक यू। Thank you.